Okay, good afternoon everyone. Good afternoon everyone. चलो अपना होना था तो लेक्चर सेमीफाइनल के साथ ही हुआ लेक्चर. एक दिन का छुट्टी का कुछ फायदा हुआ नहीं. राइट डाउन. आपने को इंड एस 8 का लास्ट क्लास में अपन ने इंड एस 8 का अपन ने लास्ट क्लास में अभी आज तो इंडिया जीतने वाला है. आज के बैच में क्या देखने का अपने को? इंड एस 8. हाँ अभी थोड़ी ना 115 करेंगे. वो तो सेमी तो बुक है आपका. अच्छा तो इंड एस वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं. सो यू कैन राइट इट बिहाइंड. सो इंड एस 8 में अपन ने लास्ट क्लास में पूरा थियरी डिस्कस किया था. वी हैड टू राइट डाउन नोट्स. डिड आई सेंड यू द इमेजेस? तो अपन अभी लिख लेते. राइट डाउन रोमन पॉइंट 1. Roman point 1. Write down accounting policies. फटाफट लिखने का. Accounting policies. Accounting policies. Underline. Refers to specific principles. Refers to specific principles. Comma rules and conventions. Rules and conventions applied by an entity while preparing financial statements. Example. FIFO in inventory valuation. FIFO in inventory valuation. उसके नीचे लिखेगा retrospective application. Retrospective application. Underline. A change in accounting policy. Is retrospectively applied. Full stop. This means applying a new policy as if that policy had always been applied. WhatsApp with them. Had always been applied. Pankaj, headphones. Had always been applied. That is, adjustments should be made to restate previous years opening balances. Center of the page लिखेंगे voluntary change in accounting policy.
voluntary change in accounting policy. दो स्प्लिट्स आएगा फॉर कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंटेड and then prior to comparative year presented. अच्छा, कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंटेड के नीचे लिखेंगे each relevant line item to be adjusted as if policy had always been applied. As if policy had always been applied. राइट हैंड साइड पे क्यूमुलेटिव adjustment should be made in opening retained earnings and opening balances of each component affected. So अपन ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एंड फॉर एग्जांपल ओपनिंग पीपी या फिर ओपनिंग इन्वेंट्री एडजस्ट कर लेते हैं, बराबर. राइट डाउन की पॉइंट्स. पॉइंट 1 की पॉइंट्स. पॉइंट 1 in case an entity applies in case an entity applies a new policy for a new transaction, comma, then such a policy would not be considered as a change in accounting policy, and hence would not require retrospective application. नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल.
A real estate broker entering into construction. A real estate broker entering into construction would follow. Real estate broker entering into construction would follow percentage completion method. Percentage completion method. Point 2. In case accounting policies are changed, on the first time adoption of Ind As, on first time adoption of Ind As framework, comma, then Ind As 101 should be applied. Then Ind As 101 should be applied. Full stop. For any changes after the transition date. For any changes after the transition date, comma, Ind As 8 would be applied. Ind As 8 would be applied. Next point. Point 3. Retrospective application is mandatory. Retrospective application is mandatory. Unless it is impracticable. Full stop. Impracticability refers to a situation where an entity cannot apply a policy retrospectively even after making every reasonable effort to do so. Example, lack of data due to destruction of accounts. Lack of data due to destruction of accounts into bracket 8 years, bracket closed. Or seizure of accounts by tax authorities. Is impracticability. Full stop.
mere commercial difficulty cannot be considered to be impracticability. Next point, write down. Fourth point. In case a new Ind As is notified, comma, but not mandatory, then entity needs to disclose in the notes the possible impact बराबर. रोमन पॉइंट 2 लिखने का. errors refers to mistakes comma omissions comma misstatements. Mistakes comma omissions comma misstatements which get detected in the current year but pertain to the previous financial years. इसके नीचे लिखेगा रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट. Errors should be retrospectively restated. Unless impracticable. Full stop. Restatement. Unless impracticable. Full stop. Restatement is done similar to that of accounting policies. That is errors pertaining to the comparative years presented should be accounted
should be accounted in those years. In those years. And errors prior to the comparative years and errors prior to the comparative years should be adjusted prior to the comparative year should be adjusted. किधर adjust करेंगे? Opening balances should be adjusted in opening balances. Opening balances. बराबर? नेक्स्ट अपन की पॉइंट्स लिखेंगे. आपने जस्ट खत्म हो गया, इसके लिए थोड़ा ज्यादा नोट्स लिखने का हो गया. नहीं, की पॉइंट्स पॉइंट 1. की पॉइंट्स पॉइंट 1. A change in accounting estimate. A change in accounting estimate. A change in accounting estimate is prospectively applied. Is prospectively applied. Full stop. An accounting estimate requires judgment. An accounting estimate requires judgment. And changes in judgment. And changes in judgment cannot be treated as errors. Cannot be treated as errors. Full stop. Errors refer to clerical mistakes of fact. To clerical mistakes of fact and not judgment. Clerical errors refer to clerical mistakes of fact and not judgment. Second and last key point before we can start our lecture today. Errors include sub-point A, fraud. Silence please. Errors include sub-point A, fraud. Sub-point B, failure to use a reliable information. Failure to use a reliable information. चलो बहुत ही टाइम पास हो गया. अरे क्या लिखने का ये सब. चलो अभी अपन एक्चुअल लेक्चर पे फोकस करते हैं. हाँ वो इमेज रह गया तो अभी क्या, फिर आपको 2 पेज छोड़ो 3 पेज छोड़ो, उससे अच्छा अपन लिखवा देते. अभी अपना मेन लेक्चर चालू करते. ओके fair. So we'll do 2 important questions to start with. First, you should understand what does retrospective restatement of account. Silence please maintain silence. You should understand what is meant by retrospective restatement in case of an error, and you should then understand what is meant by retrospective restatement of policy. Question 1, question 6. These are the most important questions because आप अपन फटाफट go through कर सकते हैं. 1 and 6 being the more important ones. We'll go to question number 1. Go to question number 1, page 16. Question number 1. Question number 1, page 16. During 2012, Beta Limited discovered that some products had been sold during 11 were incorrectly included in inventory in 31st March 2011 at 6,500.
द सेल्स हैव बीन करेक्टली रिकॉर्डेड फॉर द ईयर 2012. ओके, यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट आ रहा है? इज द इन्वेंट्री करेक्टली रिकॉर्डेड? इज द इन्वेंट्री करेक्टली रिकॉर्डेड? नो. अच्छा, बट सेल्स करेक्टली रिकॉर्ड हुए क्या? यस. ओके, कौन से साल के इन्वेंट्री में गड़बड़ हो रहा है? 2011 का क्लोजिंग इन्वेंट्री, विच विल ऑब्वियसली बिकम ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ 2012. Beta's accounting records for 2012 show sales of rupees 1,04,000, cost of goods sold of 86,500, that is including 6,500 for the error in opening inventory, and income taxes of 5250. The sales have been correctly recorded for 2011. तो दोनों पीरियड में अपने सेल का कुछ भी एडजस्टमेंट करने का क्या? सेल्स का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करने का, बट इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्यों? यस, इन्वेंट्री हैज टू बी एडजस्टेड. इन 2011 बीटा लिमिटेड रिपोर्टेड सेल्स ऑफ 73,500. टेल मी, सेल्स एडजस्ट करने का क्यों? नहीं. COGS 53,500 एडजस्ट करने का क्यों? विल COGS नीड टू बी एडजस्टेड? अच्छा, क्या एडजस्ट करना चाहिए आपके हिसाब से? इन्वेंट्री. इन्वेंट्री का एक इफेक्ट बैलेंस शीट में जाता है और किधर दूसरा इफेक्ट जाता है क्या? किधर जाता है? COGS में. अच्छा, COGS अपन कैलकुलेट कैसे करते हैं? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. सो इफ योर क्लोजिंग स्टॉक चेंजेस, will your COGS also change? Yes, COGS will also change. Profit before income taxes of 20,000, income taxes of 6,000 and profit of 14,000. The 2011 opening retained earnings was 20,000 and closing retained earnings was 34,000. Okay. Beta's income tax rate was 30% for 2012 and 2011. It had no other income or expenses. Beta Limited had rupees 5,000 of share capital throughout and no other components of equity except for retained earnings. Its shares are not publicly traded and it does not disclose earnings per share. Prepare the extract of the profit and loss and statement of changes in equity in order to give effect to the above error. Okay, just go through the question again, please. पढ़ा अपन ने? अच्छा, सर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? प्लीज पे अटेंशन टू रेट्रोस्पेक्ट टू गिव इफेक्ट टू द एरर. उसके लिए आपको बोला जा रहा है प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड देन प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. नाउ इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? एंड सबसे पहले अपन देखते हैं एरर कौन से पीरियड को पर्टेन कर रहा है. एरर इज पर्टेन टू विच पीरियड? 2011. अपना क्लोजिंग स्टॉक 6,500. यू हैव एक्चुअली सोल्ड समथिंग बट स्टिल इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक. सो इज योर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड? ओवरवैल्यूड, which means you'll have to reduce the value of closing stock. अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू अगर कम करेंगे तो COGS पे क्या असर होएगा? बढ़ेगा. So you'll increase your COGS and उसके बाद अमाउंट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होएंगे. COGS चेंज होएगा, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेंज होएगा. अच्छा, अपना टैक्स भी चेंज होएगा क्यों? यस, होएगा. देखो कितनी बार क्या होता है, रिटर्न यू फाइल बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड. अगर अपने अकाउंटिंग में कुछ एरर आया हुआ है तो रिटर्न भी अपने को रिवाइज करना पड़ेगा एंड एज अ रिजल्ट अपना टैक्स भी चेंज होएगा. अरे यस और नो? So you will prepare extract of P&L. Should you change sales? No. 2011 closing stock 2011 का COGS चेंज होएगा क्यों? Yes, 2011 का closing stock अपने को कम करना पड़ेगा, which means COGS बढ़ाएगी. अच्छा, but don't you think that the closing stock of 2011 will become the opening stock of 2012? अच्छा, तो 2012 का अगर अपन opening stock बढ़ा है तो COGS पे क्या असर होएगा? COGS बढ़ेगा. COGS बढ़ेगा. 2012 का opening stock बढ़ेगा तो COGS भी बढ़ेगा. अच्छा, अपने को COGS कम करने का बढ़ा, अपने को ओपनिंग स्टॉक कम करने का बढ़ाने का? कम करने का. सो यू हैव टू रिड्यूस द ओपनिंग स्टॉक बिकॉज देयर इज समथिंग व्हिच हैज बीन इंक्लूडेड व्हिच शुड नॉट हैव बीन इंक्लूडेड. तो अपन ये लेस करेंगे. अच्छा, लेस करेंगे तो COGS भी लेस होएगा, व्हिच मींस सेकंड ईयर का प्रॉफिट अपना बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी बढ़ेगा. अरे यस और नो? यस. ओके, राइट दिस डाउन. राइट डाउन. क्वेश्चन 1, एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L. एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L. यहां पे अपन रिस्टेटेड एक्सट्रैक्ट बना रहे. ओके, एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L.
2012 देखते हैं, दैट इज आई थिंक पॉइंट नंबर 2। 2012 का सेल्स कितना दिख रहा है अपने को? 1,04,000। एनी एडजस्टमेंट इन दैट? नो। 2011 का सेल्स कितना दिख रहा है अपने को? पॉइंट नंबर 3, 73,500 लेस वी विल सब्ट्रैक्ट COGS। अच्छा यहां पे चेंज आएगा क्या? यस, अपन डिफरेंट कलर पेन से लिखेंगे COGS। विल फर्स्ट फोकस ऑन 2011। अपना 53,500 है, उसमें क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम किया तो COGS बढ़ेगा। सो व्हाट विल वी हैव टू डू? ऐड 6,500, बराबर के नहीं? सिमिलरली यहां पे अपना COGS दिख रहा है 86,500। अच्छा 86,500 का क्या करना पड़ेगा अपने को? आइडिया लेस कितना करेंगे? 6,500, विच मीन्स यहां पे अपना लेस आएगा 80,000, लेस आएगा 60,000। इसको अपन सब टोटल करेंगे, दैट शुड गिव यू PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 24,000 एंड 13,500। अच्छा विल योर टैक्स ऑल्सो चेंज? यस, लेस टैक्स एट द रेट 30%, लेस टैक्स एट द रेट 30%। तो अपन लेस करेंगे जो भी टैक्स अमाउंट। आप अगर करंटली भी देखो तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20,000 आ रहा है, 20,000 के ऊपर अपन 30% ले तो 6,000 हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट 6,000 इज what is deducted. So maybe your profit is calculated based on, your tax is calculated based on profits only. Are yes or no? So अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं 13,500 इंटू 30%, फटाफट करने का कितना आ रहा है? 4,050 एंड 24,000 इंटू 30%, दैट इज 7,200। ये अपन लेस करते हैं, सो दिस विल गिव यू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 16,800 एंड 9,450। ये क्या है आपका जो 2011 है? दिस इज बेसिकली रिस्टेटेड 2011। एक्चुअली आप रिपोर्टेड देखोगे तो यही दिखता रहेगा क्या? नहीं, रिपोर्टेड तो जो आपने गलत किया था वो है। इज अ क्वेश्चन आस्किंग यू टू प्रिपेयर एनी अदर एक्सट्रैक्ट? दैट इज राइट। सो राइट डाउन आगे, एक्सट्रैक्ट ऑफ statement of changes in equity। extract of statement of changes in equity। अच्छा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है? शेयर कैपिटल आता है, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ इक्विटी, एंड यू आल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज अदर इक्विटी, विच इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो ये दोनों आता है, बराबर के नहीं? सो व्हाट वील हैव टू डू इज वील हैव टू सी कि आपका ओपनिंग कितना था, फिर ड्यूरिंग द ईयर कितना चेंज हुआ। अच्छा, आर वी मेकिंग एनी चेंजेस इन ओपनिंग बैलेंसेस? ओपनिंग बैलेंसेस जो है उसमें अपन कुछ भी चेंज कर रहे हैं या फिर करंट ईयर में या पास्ट ईयर में ही हो रहा है? देखो आपका फर्स्ट बैलेंस वाज 1 अप्रैल 2010 का बैलेंस, वो बैलेंस में अपने कुछ भी चेंज करना है? नहीं करना है, नहीं करना है। उसके बाद 2011 के बैलेंस में करना है? यस। सो ये जो आप स्टार्ट करोगे, यू विल हैव पर्टिकुलर्स, देन यू विल हैव शेयर कैपिटल, and then you have retained earnings, एक ही component of equity। Question tells you that it is made up of only one component, and then अपन total करते। Ideally, अगर this was for a period which is even prior, let's say ये same error pertain करता था in the year 2010, then आपका opening balance भी change होता था, because error pertains to a period which is prior to the earliest reported period। but यहाँ पे तो error pertains to the previous year जो आप report कर रहे। so over here you will have, let's say balance लिखते, balance, write down balance into bracket 1,410। शेयर कैपिटल का अपने पास बैलेंस है क्यों? सॉरी 5,000, रिटर्न अर्निंग्स 20,000, which means the total comes to 25,000, बराबर। अच्छा, why should this balance change? It should change because of profit, but is there any change in the opening balances? अच्छा, अगर ओपनिंग बैलेंस में चेंज होता तो अपन क्या करते? लेट अस अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट है। लेट अस से ये सेम चीज 31 मार्च 10 का होता,
देन 31 मार्च 10 का अपन क्लोजिंग स्टॉक चेंज कर देते. अच्छा, वो 31 मार्च 10 का क्लोजिंग स्टॉक विल अफेक्ट प्रॉफिट ऑफ 9-10. दैट विल एक्चुअली, क्लोजिंग स्टॉक आपने कम किया तो 9-10 का प्रॉफिट कम होएगा, बट प्रॉफिट कम होएगा तो टैक्स पे भी असर आएगा. एंड हेंस ये सेम 6500 इंटू 1 माइनस टी आप करते थे. अपने बोलते थे कि 6500 से प्रॉफिट कम होएगा, पर रिटर्न रिवाइज करेगा तो अपना टैक्स भी चेंज होएगा. तो 6500 इंटू लेट अस से 0.7 वुड बी 4550. 4550 जिसको अपने बोला ना क्यूमुलेटिव अमाउंट, द क्यूमुलेटिव अमाउंट विल बी एडजस्टेड. तो क्यूमुलेटिव अमाउंट होता है 4550. तो ये अपन 4550 किधर एडजस्ट करेंगे? इन दी ओपनिंग बैलेंसेस. तो अपन कैसे एडजस्ट करेंगे? इफ यू गो एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स, एकदम एंड में अपन जो प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट दिखा था, आई थिंक A.26 होना चाहिए शायद, A.28. गो टू A.28. गो टू A.28. अच्छा, A.28 में अपने दिख रहा है पूरा एक अदर इक्विटी का टेबल. अच्छा, उसमें देखो स्टार्टिंग में लिखा है बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. ये जो अपने को दिया हुआ है, उसके नीचे का नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रायर पीरियड एरर्स. तो अगर ओपनिंग बैलेंसेस में ही ये चेंज इन पॉलिसी होता तो अपन यहां पे कंसिडर करते थे. एंड देन यू हैव द रिस्टेटेड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. सो ये क्वेश्चन में ये सब करना पड़ेगा क्या अपने को? नहीं, बट इसके बाद के क्वेश्चन में शायद इसका इंपैक्ट आपको देखना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल हैव टू प्रोबेबली डू इज, बैलेंस इज गिवन एंड टू दिस बैलेंस यू विल, यहां पे जस्ट फॉर एकेडमिक कंप्लीशन, चेंजेस in accounting policies slash errors. Changes in accounting policies slash errors. तो यहां पे अपना changes in policies and errors, there is no change and hence ये same का same ही रहता है. This will give you restated बैलेंस ऑन 1st April 10. यहां पे बाय द वे सेम ही रहेगा वो रिस्टेटेड बैलेंस, 5000, 20,000, 25,000. बराबर. Are you getting this? अच्छा, अभी ये रिस्टेटेड बैलेंस चेंज क्यों होएगा? Why should the रिस्टेटेड बैलेंस चेंज? Well, during the year there should be a profit. So let us say अपने ऐड करते हैं प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट देंगे? क्वेश्चन में जो दिया हुआ है या अपने जो रिवाइज कैलकुलेट किए? रिवाइज कैलकुलेट किए. शेयर कैपिटल में तो कोई चेंज नहीं है, बट प्रॉफिट रिवाइज कितना आ रहा है ऊपर अपना? 9450. So it should increase because of 9450. And that will give you balance on 31st March 11, 5,029,450. $34,450 plus we have profit. This is for 11-12. अभी कितना प्रॉफिट है अपना? 16,800. And this is balance 31st March 12, 5,000, 46,250, 51,250. आपने समझा रेट्रोस्पेक्टिव रिस्टेटमेंट कैसे होता है? अपन एक्चुअली ऊपर जाके रिस्टेट किया एंड हेंस आपके पूरे वर्किंग्स डिफरेंट हुए एज कंपेयर टू जो लास्ट ईयर आपका दिखता था. आर यू क्लियर विद दिस? इज एवरीवन क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देन यू गो टू क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज द May 2019 RTP क्वेश्चन. क्वेश्चन 6 इज द May 2019 RTP क्वेश्चन. इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करोगे. ये दोनों आपके क्वेश्चन हो जाते तो अकॉर्डिंग टू मी इसके बाहर आपको Ind As 8 से आना एकदम ही अनलाइकली है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. ABC changed its method adopted for inventory valuation in the year 1819. Can it change its method of inventory valuation? इसको अपन क्या बोलते हैं? चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी या एस्टिमेट?
policy. Prior to the change, inventory was valued using FIFO. However, it was felt that in order to match current practice and to make the financial statements more relevant and reliable, a weighted average calculation model should be appropriate. Okay, so अपन FIFO से weighted average किया. The effect of the change in the method of inventory valuation was as follows: 31st March 17, 18 and 19. This is the change in inventory, right? 31st March 17 का inventory, then 18 का inventory, and then 19 का inventory. Profit or loss under FIFO valuation model is as follows: 18-19 and 17-18 revenue, COGS, GP, expenses and profit given. The retained earnings as on 31st March 17 were 423 million. Present the changes in accounting policy in the profit or loss and produce an extract of the statement of changes in equity in accordance with Ind As 8. Just go through the question again, please. सो क्या नंबर चेंज हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं, क्या नंबर चेंज हो रहा है? इन्वेंट्री. अच्छा, इन्वेंट्री तो जाता है बैलेंस शीट में. आर यू आस्क्ड टू प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट? नो. तो फिर पीएल में तो कोई चेंज आएगा नहीं. क्या चेंज आएगा? प्रॉफिट चेंज होगा. इन्वेंट्री से प्रॉफिट चेंज होगा. वाई? बिकॉज इन्वेंट्री अफेक्ट सीओजीएस. अच्छा, हाउ डू यू कैलकुलेट सीओजीएस? दैट मींस यू कैलकुलेटेड एज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक. दैट विल गिव यू सीओजीएस. And COGS in turn has an impact on profit. Acha, let us start with the year ended 31st March 17. For the year ended 31st March 17, आपको 31st March 17 के ओपनिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है या क्लोजिंग स्टॉक का डेटा दिया हुआ है? सॉरी, इट इज डेटा ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st March 17, विच मीन्स ओपनिंग स्टॉक में कोई चेंज नहीं है. परचेज तो आपके पास ऐसे भी है नहीं, फर्क पड़ता भी नहीं है. बट क्लोजिंग स्टॉक में चेंज है क्या? अच्छा, what is happening to the closing stock? Is it increasing or decreasing? Increasing by how much? Sorry? 10. अच्छा, if closing stock increases by 10, COGS will fall by 10. अच्छा, if COGS falls, sales minus COGS is GP. Selling price remaining constant, if COGS falls, profit पे क्या असर होएगा? Increase or reduce? इंक्रीज बाई 10. अच्छा, ये अपन ने क्यों ऐसा टेबल बनाया है? बिकॉज क्वेश्चन टेल्स यू नेक्स्ट ईयर क्या हो रहा है, तो 15 से इंक्रीज हो रहा है. अरे बट 15 से इंक्रीज हो रहा है बराबर है, बट साथ में लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक बिकम्स करंट ईयर ओपनिंग स्टॉक, विच इफेक्टिवली मीन्स दैट ऑन 31st March 18 योर ओपनिंग स्टॉक विल बिकम हायर बाई 10 रुपीज. परचेजेस रिमेनिंग कॉन्स्टेंट. आपके सीओजीएस पे क्या असर होगा? आप ऐसा सोचा, अपन सोचते कि यार ओपनिंग स्टॉक 10 से बढ़ेगा. इफ ओपनिंग स्टॉक इंक्रीजेस बाय 10, सीओजीएस इंक्रीजेस बाय 10. बट इफ क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीजेस बाय 15, सीओजीएस फॉल्स बाय 15. सो नेट इंपैक्ट ऑन सीओजीएस इज हाउ मच? 5. अच्छा, 5 क्या है? नेट फॉल. तो उसके वजह से प्रॉफिट पे क्या असर होएगा? इंक्रीज बाय 5. एंड देन द ईयर एंडेड 31st March 19, क्या लिखेगा? 15 एंड 20. तो क्या असर आएगा वापस? fall down by 5 and profit increase by 5. अभी अपने को देखना है कि यार कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्चुअली प्रेजेंटेड है. इज द ईयर 2016-17 प्रेजेंटेड? अच्छा, तो उसमें जो ये 10 रुपीज का इंपैक्ट है वो किधर एडजस्ट करना पड़ेगा? ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स. अच्छा, तो अपने को प्रॉफिट का कॉलम देखना है, सीओजीएस का कॉलम देखना है? प्रॉफिट. तो यू हैव टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय 10. Does the question give you anything about tax? अच्छा, टैक्स रेट दिया था तो टैक्स का भी एडजस्टमेंट डालना पड़ता था, नसीब से दिया नहीं अपने को. अच्छा, इन द ईयर 17-18, इज द ईयर 17-18 गिवन टू इन द क्वेश्चन? अच्छा, if 17-18 is given, then any change has to be done in the line items of 17-18 or directly the profit of 17-18? Line items. So line items क्या है? COGS. तो यहाँ पे COGS 5 से लेस करेंगे. अच्छा, अगेन द सेम सिचुएशन अप्लाइज फॉर 18-19. COGS 5 से करेंगे, you will automatically see profit changes by 5.
बट वाई डिड वी मेक दिस टेबल? बिकॉज जब भी अपन ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स चेंज करने को जाएंगे तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स में 10 का प्रॉफिट एडजस्टमेंट आएगा. इन सीओजीएस का प्रॉफिट का ऑपोजिट रिलेशनशिप है. योर सीओजीएस फॉल्स बाय 10 अनडाउटेडली, बट व्हाट गोज इनटू रिटेन अर्निंग्स इज अल्टीमेटली प्रॉफिट. तो यू हैव टू फिगर आउट कि यार सीओजीएस प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट दे रहा है. सीओजीएस तो प्रॉफिट, अगर सीओजीएस गिरेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, एंड हेंस वहां पे इंक्रीज का इफेक्ट आएगा. इन द सेकंड एंड द थर्ड ईयर आपका प्रॉफिट बढ़ाना ही है, बट आपको एडजस्टमेंट करना है थ्रू योर इंडिविजुअल लाइन आइटम्स. डज दिस मेक सेंस? राइट डाउन वर्किंग नोट 1. Question number 6, working note 1. Impact of changes in policy. Changes in policies. बराबर. ये वर्किंग नोट बनाने का फटाफट वर्किंग बनाने का. अच्छा, एक बार ये हो जाता है फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होएगा एडजस्टमेंट अपना. ये हुआ नहीं अपना. सॉरी. अपना लेवल ऑफ सिंसेरिटी भी इतना हाई है. राइट डाउन बिलो दिस. एक्सट्रैक्ट ऑफ पीएनएल. अच्छा, अपने कितने साल का पीएनएल बनाना है? 2 साल का. कौन से 2 साल है? एक होता है 18-19, एक होता है 17-18. Will there be any adjustment in revenue? No. Revenue अपना सेम का सेम रहेगा. 324 and 296. अच्छा, will there be any adjustment in COGS? Yes. Less COGS. अच्छा, अपन इंक्रीज कर रहे हैं COGS या रिड्यूस कर रहे हैं? रिड्यूस. तो अपने सबसे पहले 5 से रिड्यूस करना है. 173 का क्वेश्चन में COGS दिख रहा है, उसको -5 करेंगे. ये वाले 5 का असर अपन ने दिया हुआ है, द सेकेंड वाला. आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसके बाद वापस अपन 5 का इफेक्ट देने का ट्राई करते हैं. लास्ट ईयर का जो है 164 minus 5, 164 minus 5, and this comes to 168 and 59. तो अपन ने ये सेकंड वाले 5 का भी इफेक्ट दे दिया. And then we get profit. Question tells you this is called as GP. 156 and 137. अच्छा, इसमें से इसके लेस अपन एक्सपेंसेस कर रहे हैं. आर योर एक्सपेंसेस चेंजिंग? नो, देयर इज नो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और देयर इज नो एरर एज वेल. सो ये 83 लेस होएगा, 74 लेस होएगा. यू विल सब टोटल दिस एंड यू विल गेट फाइनल प्रॉफिट. अच्छा, इस पे एक अच्छा पॉइंट अपने को स्टडी करना चाहिए. फाइनल प्रॉफिट देखो आपको कितना आ रहा है. 73 and 63 आएगा. क्वेश्चन में देखो कितना दिख रहा है आपको प्रॉफिट. अच्छा, आर यू सीइंग एन एग्जैक्ट इंक्रीज ऑफ 5? बट आपने 5 का इफेक्ट नहीं दिया, आपने लाइन आइटम में इफेक्ट दिया, तो ऑटोमेटिकली इट विल ट्रांसलेट टू एन इंक्रीज इन प्रॉफिट. बट ओपनिंग रिटर्न अर्निंग्स में अपने पास सीओजीएस में 10 लेस करने का कोई स्कोप ही नहीं है. वी आर नॉट शोइंग सीओजीएस एनीवेयर, एंड एज द रिजल्ट अपने को डायरेक्ट प्रॉफिट एडजस्टमेंट करना पड़ा. अरे यस और नो? यस. सो दिस इज प्रॉफिट दैट इज 73 and 63. Next we have extract. Anything else to be done?
नहीं, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अपन पूरा बना ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपने को शेयर कैपिटल भी नहीं दिया हुआ, आपने सिर्फ रिटर्न अर्निंग्स दिया हुआ। पर यहाँ पे एक नया इंटरेस्टिंग चीज आएगा, आपका ओपनिंग एडजस्टमेंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है, कैसे चेंज करेंगे इसको? सो हाउ विल वी प्रेजेंट इट? विल शो इट एज बैलेंस ऑन 31 मार्च 17। अपने पास रिटर्न अर्निंग्स एक ही है, सो आरई करके हेडिंग देंगे रिटर्न अर्निंग्स। हाउ मच इज द बैलेंस ऑफ रिटर्न अर्निंग्स? अच्छा, तो अपन डायरेक्टली 423 के ऊपर 63 रुपीज प्रॉफिट ऐड करेंगे? नहीं, वो 423 के अंदर प्रॉफिट गया है और वो प्रॉफिट अपने को चेंज करना पड़ेगा। तो अपने क्या सीओजीएस का एडजस्टमेंट लेके प्रॉफिट का एडजस्टमेंट लेके? प्रॉफिट। सो डिफरेंट कलर पेन से लिखना है अपने को, प्लस चेंजेस ड्यू टू inventory valuation, changes due to inventory valuation. How much is that? 10. ये अपने को ऐड करने का है, and hence you have restated balance. Silence please. Restated balance on 31st March 17. March 17. बराबर। इसमें अपना क्या चेंज होना चाहिए? Why should this change now? Profit of the year 17-18 first 63 and then 18-19. Are we done? So these are the two core questions on this standard. बराबर। दूसरे questions manageable है, easy है। एग्जाम वेटेज आना अनलाइकली, ये दोनों में से कोई डेफिनेटली आ सकता है अगर ये स्टैंडर्ड से आता है तो। यू आर एक्चुअली सपोज्ड टू रिस्टेट। यस, वी क्विकली फिनिश ऑफ द अदर क्वेश्चंस। गो टू क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 2। A material error in creating depreciation provision for the preceding year 31st March 12 was discovered while preparing financial statements of 13. अच्छा, अपन 13 बना रहे हैं and error 12 में है, तो 12 तो अपन present करेंगे ही ना। So will we actually go and change the depreciation or will we have to change the opening balances? Depreciation directly. The amount recognized in the statement of P&L for 31st March 12 was 1 lakh instead of 50,000. तो शायद आपने 2 बार depreciation का posting कर दिया, तो अपने को 50,000 का डिप्रेशन रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, शो द इफेक्ट ऑफ द एरर। वेल, you'll have to change 50,000 in the last year's P&L. How would the error be accounted if it pertains to 31st March 10, okay, which is before the earliest reporting period? Then we will not adjust depreciation, then we will adjust profit, same COGS में आपने जो अभी किया, एंड उसके थ्रू आपका ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स चेंज होएगा। अच्छा, तो सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा आपके हिसाब से? एक तो आपका चेंज ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीपी, परफेक्ट, और ओपनिंग पीपी विल आल्सो अंडरगो चेंज। स्ट्रेट फॉरवर्ड। यस, ओके, राइट दिस डाउन, राइट डाउन क्वेश्चन 2।
नहीं वहां पे नहीं, थोड़ा लिखते हैं ना. Question number 2. In the given case, comma, the excess depreciation of 11-12 should be adjusted by restating the financials of 11-12. And showing depreciation at 50,000 instead of 1 lakh. At 50,000 instead of 1 lakh. Full stop. The corresponding effect would also be given. In fixed assets. Full stop. Next paragraph. In case the error pertains to 9-10, that is prior to the earliest reported period. Comma. Then depreciation of 50,000 would be directly adjusted against opening retained earnings. Of 11-12 and a corresponding adjustment should be made to opening fixed assets. Full stop. In any case, comma, a disclosure needs to be given for the nature and amount of error. And the year to which it pertains. Question number 3. An entity changed in 2012 its accounting policy with respect of valuation of inventory from FIFO to weighted average. This being a voluntary change, it has been applied retrospectively. ये सही है, अपन एक सम भी देखा था इसके ऊपर. The entity had commenced operation in 2006. No records of earlier years are available as a virus attack on the server in 2012 had wiped off all the past records. Okay. It is not possible to recreate the record. Show the effect of accounting policy change. Will you have to do it retrospectively? Why not? Impracticable. The entity cannot, even after doing every reasonable effort to do so. Impracticability. Barabar? Write down. In the given case, comma, the entity
is entering into a new business. And hence, I'm sorry. एक काम करते हैं, कुछ ज्यादा कैंसिल नहीं करते, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन का सेम सोल्यूशन है. An entity was only trading in construction equipment. The revenue on sale of equipment is recognized when the risk and reward is transferred. It now gets a project to construct a highway. For this activity, it wants to adopt percentage completion method under 115 लिख लो आप दोनों जगह पे. 18 and 11 को कैंसिल करके 115 लिख लो. आपको मजे हो गए. कैंसिल करो, 115 लिखो. Is this a change in accounting policy? Is this a change in accounting policy? No, it's a new accounting policy applied to a new transaction. पहले अपन क्या कर रहे थे, अपन इक्विपमेंट का ट्रेडिंग कर रहे थे. अभी अपन इक्विपमेंट का ट्रेडिंग बंद करके हाईवे बनाने चालू किया. So we have taken a new business, and a new business you have applied a new policy. So that's not a change in accounting policy. बराबर. तो अपन ने क्या लिखा है अब तक? एंड हेंस. तो एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 3 कर दो, छोटा सा चेंज. अरे 4 कर दो, छोटा सा चेंज. क्वेश्चन नंबर 4. एंड hence the application of percentage completion, and hence the application of percentage completion method is a new policy applied to a new transaction. Is a new policy applied to a new transaction. And hence cannot be treated as a change in accounting policy. And hence cannot be treated as a change in accounting policy. Cannot be treated as a change in accounting policy. बराबर. अभी अपन क्वेश्चन 3 का सोल्यूशन लिखते हैं. क्वेश्चन 3. As per Ind As 8, a change in accounting policy should be retrospectively applied. A change in accounting policy should be retrospectively applied unless it is impracticable. Unless it is impracticable. Full stop. Next paragraph. Next paragraph. Unless it is impracticable. Next paragraph. In the given case, comma, the virus attack in 2012. In the given case, comma, the virus attack in 2012 makes it impracticable to determine the cumulative effect. Impracticable to determine the cumulative effect of changes prior to 2012. Of changes prior to 2012. Full stop. Next line. Hence, the entity would apply. Hence, comma, the entity would apply weighted average cost formula. Weighted average cost formula from 2012 only. And explain the reasons of impracticability. And explain the reasons
of impracticability for the years prior to 2012. For the years prior to 2012. Barabar? And the last question. Question number 5. Whether an entity is required to disclose the impact of a new Ind As which has been issued but not yet effective with the financial statements as per Ind As. जैसे 116 है. Will it have to disclose? Yes. उसका impact लेना नहीं है, but उसका क्या cumulative impact हो सकता है. Shareholder is worried, तो वो अपन disclose करेंगे. Yes, write down. Question 5. An entity needs to disclose the impact of a new Ind As, the impact of a new Ind As which has been issued but not yet effective, which has been issued but not yet effective. In the notes, full stop. In the notes, full stop. Broad changes expected in the future. Broad changes expected in the future. On application of the new Ind As. On application of the new Ind As. Should be disclosed. Should be disclosed. Barabar? Yes. So that takes care of Ind As 8. We go to the next standard, the last of the smaller standards, that is Ind As 7. This is on cash flow statement. The likelihood of this standard landing up in your exam is frankly quite remote, especially because आपको आईपीसी में इंश्योर्ड भर के कैश फ्लो पूछ के रखा हुआ है. वो एफएम में पूछा, अकाउंट्स में पूछा, बहुत कुछ पूछा. तो अभी अपने को चांस थोड़ा कम है. इनफैक्ट द फुल फ्लेजेड कैश फ्लो इज वेरी वेरी अनलाइकली. द फुल फ्लेजेड कैश फ्लो आपको शायद थोड़े थोड़े इधर उधर एडजस्टमेंट जो होते हैं, कैश एक्विवेलेंट क्या होता है, इनकम टैक्स किधर जाना चाहिए, फॉरेन करेंसी का गेन किधर जाएगा, सब्सिडरी सेल हुआ तो किधर दिखेगा, एक स्टेक एक्विजिशन हुआ तो, ये सब के ऊपर आपको छोटे 2 या 3 मार्क के केस आने का चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू द फुल फ्लेजेड कैश फ्लो स्टेटमेंट. आर वी गेटिंग दिस? Are you broadly aware about the types of cash flows inside the cash flow statement? कितने टाइप के कैश फ्लोज दिखाते हैं? 3. Which 3? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेशंस में अपना डे टू डे कोर्स ऑफ ऑपरेशंस में जो आता है, जैसे सेल्स है, कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर्स है, पेमेंट टू क्रेडिटर्स वगैरह दिखता है. इन्वेस्टिंग में अपन क्या क्या दिखाते हैं? दोज आइटम्स विच वी एक्चुअली परचेज, मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स. जिधर रिमेंबर असेट जाता है परचेस, उधर असेट का सेल भी जाना चाहिए. जिधर इन्वेस्टमेंट का परचेस जाता है तो इन्वेस्टमेंट का सेल भी उधर ही जाना चाहिए. अरे यस और नो? नाउ वे यू अर्न इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स. वेयर डू इन्वेस्टमेंट्स गो? Investing activity. So where should interest income on investment go? Investing activity. It is investing activity. Remember, interest income comes out of investments, and if investments go into cash flow from investing, the interest income on the investments will also go there. अरे बराबर क्या नहीं? अच्छा, then you have cash flow from financing. Financing में क्या आएगा? Usually जो आपका raise the sources of finance, equity share capital, preference shares, debentures, loans, etc. ये सब अपन cash flow from financing के अंदर लेंगे. So whatever items are attached to them, for example, if loans are taken in cash flow from financing, interest on loans should also go there. If equity shares are taken in cash flow from financing, then the dividend on equity shares should also go there. अच्छा, ये 3 मेन कैश फ्लोज हुए. इसके नीचे अपन क्या देखा था? नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. उसको ऊपर ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, एंड दैट गिव्स यू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अपने को दिखता है बैलेंस शीट में सेम आएगा. वो कैश तो अपने को पता है. कैश इक्विवेलेंट क्या होता है आपके हिसाब से? व्हाट इज कैश इक्विवेलेंट? इज पीपी कैश इक्विवेलेंट? इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स? नो. Intangible assets? No. Then what is cash equivalent? Short-term marketable securities which can be converted into a known amount of cash. वापस
शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ नोन अमाउंट ऑफ कैश। शॉर्ट टर्म को कैसे डिफाइन किया जाता है यहाँ पे? 3 और लेस देन 3 मंथ्स, 3 और लेस देन 3 मंथ्स। अच्छा, यहाँ पे इंस्टीट्यूट आपको गाइडेंस देता है ये 3 महीने काउंट कहां से होता है? शुड यू काउंट दिस 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट और द डेट ऑफ बैलेंस शीट? That is incorrect. You will count it from the date of acquisition. For example, you buy a bond investment, on 1st of April 2010. This is an investment which is going to mature on 30th June 2018. अभी अपन किधर पहुंच गए? अपन 31st March 18 पे पहुंचे। तो अपने तो होल्ड करके रखा है बॉन्ड 2010 से 8 साल के लिए अपने होल्ड करके रखा हुआ है। अभी अपन बैलेंस शीट पे आए तो अपने को दिख रहा है 3 महीने के अंदर बॉन्ड मैच्योर होने वाला है। अच्छा, बॉन्ड इज हाईली मार्केटेबल, इट इज अ गवर्नमेंट बॉन्ड, इट डज नॉट चेंज एज मच इन वैल्यू। इक्विटी शेयर नहीं है कि घड़ी घड़ी वैल्यू चेंज होता जाएगा। सो विल दिस बॉन्ड बी क्लासिफाइड एज अ कैश इक्विवेलेंट? नो, बिकॉज योर होल्डिंग पीरियड वॉज ग्रेटर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर अपन बैलेंस शीट डेट से काउंट करते थे, लेट अस से दिस वाज 30th May, तो यार 2 महीने ही हो गया। और बैलेंस शीट से काउंट करते हो बोलते हाँ यार 2 महीने में मैच्योर होने वाले, बट आपने तो उसको ओरिजिनली रिकॉर्ड किया रहेगा इन्वेस्टमेंट में। तो आप सोचो कितना टफ अकाउंटिंग हो जाएगा। आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड कुछ भी मैच्योर होने को आएगा तो आपको उसको इन्वेस्टमेंट से एफई, टीपीएल, एफईडी, ओसीआई से रिक्लासिफाई करके कैश इक्विवेलेंट में डालना पड़ेगा। अरे यस और नो, बट यू कांट बी, इट वॉज क्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट, शायद अमोर्टाइज कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता रहेगा, क्या पता क्या रिकॉर्ड होता है। यू कांट जस्ट पुट इट इनटू कैश इक्विवेलेंट सेक्शन, राइट? सो स्टैंड अप को क्या बोलता है, अगर स्टार्टिंग से वो कैश इक्विवेलेंट के सेक्शन में तो उधर रहने देगा, अदरवाइज अपन नहीं रहने दे सकते। सो बेसिकली योर 3 months दैट यू हैव टू सी इज टू बी काउंटेड फ्रॉम विच डेट? डेट ऑफ एक्विजिशन। लेट अस चेंज दिस केस अ लिटिल। लेट अस से बॉन्ड का ओरिजिनल इश्यू डेट वाज 1st April 2010 ओनली, बट आपने इश्यू पे बॉन्ड खरीदा नहीं। आपने बॉन्ड कभी खरीदा? आपने बॉन्ड खरीदा 15 मार्च को। यू बॉट द बॉन्ड ऑन 15th March 18, वो अभी 2 महीने में, कुछ 2.5 महीने में मैच्योर हो रहा है। रिमेंबर द बॉन्ड वाज इश्यूड फ्रॉम 1st of April 10, यू बॉट द बॉन्ड ऑन 15th of March 18. Is it now a cash equivalent? Assuming it is liquid and assuming there's no real change in the value, it's going to convert into known amount of cash. Is it liquid? Is it cash equivalent? Yes, because your time gap from the date of acquisition is now lower than 3 months. Are you getting this? अच्छा, let us assume this same case. ये बॉन्ड के जगह पे यहां पे इक्विटी शेयर आ जाता है, एंड इक्विटी शेयर अपन परचेस करते हैं 15th of March 18 को। कैन दिस बी कंसिडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट? देखो 2 रीजन है। सबसे पहले इक्विटी शेयर में मैच्योरिटी नहीं आ सकता, इट इज इम्पॉसिबल। इक्विटी शेयर बाय नेचर आर नॉन रिडीमेबल। हाउएवर अगर अपन हाइपोथेटिकली कुछ सोच भी ले, मैच्योरिटी भूल भी जाए, तो अपने को उतना याद रखना है कि यार इक्विटी शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ वैल्यू। आज क्या वैल्यू, 2 दिन बाद क्या वैल्यू, एकदम अलग होगा। अब जेट एयरवेज का भाव देख रहे हो कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट के यार इक्विटी शेयर का वैल्यू अल्टीमेटली जब भी अपन बेचने जाएंगे क्या आएगा, विच इज नॉट द केस इन बॉन्ड्स, which is not the case in treasury bills जो अपने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स माने जाते, which is not the case in बैंक फिक्स डिपॉजिट्स। ये सब जैसे बैंक एफडी आपने आज लिया, आपको एग्जैक्टली पता है वो कितने अमाउंट ऑफ कैश देगा। अच्छा, बच्चों को क्या लगता है बैंक एफडी इज ऑलवेज कैश इक्विवेलेंट, दैट इज रॉन्ग। इफ अ बैंक एफडी इज टेकन which is having a maturity of less than 3 months, that is when it is a cash equivalent, otherwise even FD is not taken as a cash equivalent. Are we getting this? It has to have a maturity of less than 3 months from the date when you acquire, and it should convert into a known amount of cash. FD is converted into known amount of cash. Government bonds convert into known amount of cash. Equity shares do not convert into known amount of cash. अच्छा, what about preference share? Preference share किससे ज्यादा सिमिलर होता है, equity share या डिबेंचर? अच्छा, can debentures be taken as cash equivalents? Yes, because they are going to convert into known amount of cash unless a question tells you that debenture is very volatile or it is highly illiquid. अपन अज्यूम करेंगे डिबेंचर तो नोन अमाउंट ऑफ कैश पे रहेगा। सो कैन इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स व्हिच हैव अ मैच्योरिटी ऑन 30th May, कैन दे आल्सो बी ट्रीटेड एज कैश इक्विवेलेंट? यस। स्टैंड अप बोलता है आपको इंस्ट्रूमेंट देखना है और इंस्ट्रूमेंट में ये देखना है कि इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म है, वो आपको रिलायबल अमाउंट ऑफ कैश देता है। इफ यस, देन उसको अपन कैश इक्विवेलेंट बता दे सकते हैं। आर वी गेटिंग दिस? यस, इज एवरीवन क्लियर? अच्छा, यहां पे अभी और एक कॉम्प्लेक्स चीज आ सकता है। देयर कैन बी समथिंग कॉल्ड एज ओपन एंडेड इंस्ट्रूमेंट्स। ओपन एंडेड समझते हैं अपन? ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड समझते क्या होता है? एंट्री एंड एग्जिट आर ओपन, यू कैन enter whenever you want to, you can exit whenever you want to, you can go to the fund and you can say give me my money back, which means an open ended fund will never have a maturity date.
अपने बोलते 30th में, बट 30th में तो यार कभी ओपन एंडेड फंड में होगा ही नहीं, बिकॉज आपको चाहिए तो आप नेक्स्ट डे पे जाओ, कंपनी आपको पैसा दे देगा वापस. इन विच केस कैन एन ओपन एंडेड गवर्नमेंट बॉन्ड बी ट्रीटेड एज अ कैश इक्विवेलेंट? ओपन एंडेड गवर्नमेंट बॉन्ड, उस अपन ने खरीदा है गवर्नमेंट बॉन्ड 15 मार्च को. तकलीफ क्या, अपन 3 महीना देखने जाते हैं, अपने को दिखता ही नहीं, उसका मेच्योरिटी डेट ही नहीं होगा. आपको चाहिए तो आप 16 मार्च को भी मेच्योरिटी मांग सकते हो, आपको चाहिए तो आप 20 साल बाद भी मेच्योरिटी मांगोगे. उसका कोई मेच्योरिटी डेट ही नहीं, आपको चाहिए तभी आप मेच्योर करवा सकते हो उसको. कैन दैट बी ट्रीटेड एज अ कैश इक्विवेलेंट? Yes, provided your intention is to get the maturity within a 3-month period and that bond is not subjected to a high degree of change in value. ये अपन assume करेंगे everywhere unless otherwise, उनके वैल्यू बहुत चेंज नहीं होगा. इक्विटी शेयर में अपन assume करेंगे वैल्यू चेंज होगा. बॉन्ड, प्रेफरेंस शेयर एज वेल एज गवर्नमेंट बॉन्ड में अपन assume करेंगे कि वैल्यू ज्यादा सब्सटेंशियली चेंज नहीं होगा. आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रहा अपने? फिर ओके, नाउ कम्स अनदर स्टिकी एरिया, bank overdraft. Is bank overdraft cash equivalent, or if you take bank overdraft it should be shown as cash flow from financing? It's always a sticky point where students and practically also people don't have as clear a guidance. यार bank overdraft किधर ले? Should you take it as a part of cash equivalents and take only net cash balance, or should you show it as a part of cash flow from financing? अगर अपने during their bank overdraft दिया तो financing लेने का क्या करना चाहिए? देखो आप लोग मिक्स्ड आंसर दे रहे हो, and that is the reason why there is no clear guidance. तो Ind As आपको गाइडेंस देता है. Ind As says that bank OD should be a part of cash equivalents if it is a part of the regular cash management activities, otherwise it will be shown as cash flow from financing. अपने बोले गाइडेंस दिया नहीं दिया उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, अपने तो सेम ही लग रहा है. पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट समझेगा कैसे? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट? यूजुअली अपने आईपीसी में कैश बजट बना है क्या? यस. तो कैश बजट में कभी कभार हो जाता तो कैश नेगेटिव. अच्छा, तो अपने बैंक ओडी क्यों लिया है? अपने को वो टेंशन है कि यार कोई एक आधे महीने में एक बड़ा पेमेंट आ गया और चेक बाउंस हो गए, वैसा सिचुएशन अपने को चाहिए ही नहीं. अपने को ऐसा नहीं दिखाने का कस्टमर को अपने पास पैसा नहीं है. कल उठ के ऐसा कुछ कैश ऊपर नीचे हो गया, शायद एक आध महीने में अपना स्लैक सीजन है, ज्यादा खर्चा हो गया, तो अपना कस्टमर या अपना सप्लायर को अपने चेक दिया बाउंस नहीं होना चाहिए. व्हाट इज बैंक ओडी? बेसिकली नेगेटिव बैंक बैलेंस. आपने चेक लिखा, अगर आपका 20,000 का बैंक बैलेंस है, आपने 40,000 का चेक लिखा, वो बाउंस होएगा. बट बैंक ओडी फैसिलिटी है, वो आपका बैंक अकाउंट नेगेटिव 20,000 बैलेंस दिखा देगा. यस और नो? एंड एज अ रिजल्ट वी हैव नॉट टेकन बैंक ओडी बिकॉज अपने को कोई असेट खरीदने का. अपने बैंक ओडी इसके लिए लिए बिकॉज अपने को टेंशन है कि कैश मैनेजमेंट कभी ऊपर नीचे हो गया तो अपना नेगेटिव कैश जाएगा, चेक बाउंस नहीं होना चाहिए. अरे तो जब भी गया तभी वो थोड़े पीरियड के लिए नेगेटिव रहेगा, इंटरेस्ट अपने को पे करना पड़ेगा, फिर वापस पॉजिटिव हो जाएगा, फिर वापस नेगेटिव पॉजिटिव ऊपर नीचे हो सकता है. हावेवर अगर कोई बैंक ओडी आपका कंसिस्टेंटली नेगेटिव रहा है, दैट मीन्स आपके पास उतना कैश है ही नहीं. पूरे साल अगर बैंक ओडी नेगेटिव रह रहा है, विच मीन्स आपने बैंक ओडी के भरोसे कोई असेट जैसे कैमरा है, कंप्यूटर है, कोई असेट खरीद लिया आपने, एसी है, एंड एज अ रिजल्ट वो बैंक ओडी पॉजिटिव ही नहीं हो पा रहा. अगर वो पार्ट ऑफ कैश होगा तो कैश ऊपर नीचे होएगा, तो बैंक ओडी ऊपर पॉजिटिव आना चाहिए ना. अगर कंसिस्टेंटली लेट से अपने पास कैश है 10-20 हजार का, आपने 50,000 का एक लैपटॉप लेकर रख दिया, तो दैट मीन्स कैश नेगेटिव हो जाएगा. ऑन एन एवरेज अपने बिजनेस में 10-20 हजार का ही कैश आता है, तो कैश आएगा खर्चा अपना ओडी 40 से 30 होएगा, वापस 40 होएगा, 30 होएगा, 40 होएगा, बिकॉज आपने अपना चादर उससे ज्यादा ओडी लेकर रखा है, आपने उससे असेट खरीद कर रखा है, तभी तो पूरा 12 महीने में नेगेटिव दिख रहा है. अगर वो जेन्युइनली कैश मैनेजमेंट का पार्ट है तो जब भी आपने एक एक्सेस बड़ा चेक ड्रॉ करके रखा तभी वो नेगेटिव जाएगा. बट देन जब भी स्लैक सीजन निकल गया उसके बाद वापस वो पॉजिटिव हो जाएगा, ऊपर नीचे होता जाएगा. बट अगर कोई बड़ा असेट आप खरीद के बैठ गए हो तो भले अच्छा सीजन हो, पॉजिटिव होएगा ही नहीं. एंड द इंडिकेटर विच टेल्स यू दैट द बैंक ओडी शुड बी अ पार्ट ऑफ कैश और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इज वेदर इट इज कंसिस्टेंटली नेगेटिव, विच मीन्स आपने कुछ तो खरीद कर रखा है उससे. वरना ऐसा कोई बिजनेस नेगेटिव कैश बैलेंस से थोड़ी ना चल सकता, अनलेस आप कुछ खरीद के बैठ गए और अभी आपके पास उतना पैसा ही नहीं है कि बैंक ओडी आप पे करो, तो एक लोन फीचर होगी. अपने पास पैसा नहीं, अपन लोन लिया, असेट खरीदे एंड बाद में फ्यूचर में पे करेंगे. बट अगर कैश मैनेज का पार्ट है तो ऊपर नीचे होता जाएगा. सो अपने एग्जाम में कैसे समझेगा बैंक ओडी किधर लेने का? इंस्टीट्यूट विल टेल यू 5 or 6 months एंड विल टेल यू बैंक बैलेंसेस. आपको 4, 5, 6 महीने में नेगेटिव बैलेंस दिखा, बोलने का यार बैंक ओडी इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इट इज नॉट कैश इक्विवेलेंट. बट अगर आपको दिखा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इन विच केस अपने बोले कि नहीं यार ये तो शायद एक आधे महीने में कुछ स्लैक करेगा तो अपने
नेगेटिव जा रहा है अदरवाइज से पॉजिटिव रह रहा है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ योर कैश मैनेजमेंट. जो आप कैश बजट में बनाते थे, वो जो बैंक ओडी दिखता था, दैट वाज अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट. क्या एक आधे महीने में कैश बजट में आपके पास पैसा कम है तो नेगेटिव हो गया, फिर वापस आपने कुछ कैश मैनेज कर दिया तो वापस पॉजिटिव आ गया. सो इट इज नॉट रियली अ लोन, इट इज जस्ट टू एंश्योर दैट इन सम मंथ्स व्हेन योर कैश माइट फॉल शॉर्ट, यू हैव अ फैसिलिटी कि आपका चेक्स बाउंस ना हो जाए. दैट्स अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट. आर यू गेटिंग दिस? समझ आता है बैंक ओडी का भी पॉइंट? ओके, नाउ देयर इज वन मोर पॉइंट ऑन कैश इक्विवेलेंट दैट वी नीड टू डिस्कस. लेट अस से हाइपोथेटिकली एक कंपनी है, उसने पूरे साल में कुछ भी धंधा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया पूरे साल में, तो उसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कितना होएगा? जीरो. कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कितना होएगा? जीरो. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग कितना होएगा? कुछ भी नहीं किया. क्वाइट लिटरली नथिंग हैज मूव्ड. हावेवर ये कंपनी के पास क्या था? साल के बिगिनिंग में देयर मस्ट बी एन ओपनिंग कैश. अरे उस साल के एंड में अभी वो देखो क्या करते हैं अपन, नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखा दे. अरे बराबर क्यों नहीं? तो नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या आता है? इट इज द टोटल ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. यहां पे तो कुछ आएगा नहीं, जीरो आएगा. बट अभी ओपनिंग कैश इक्विवेलेंट रहेगा. अगर पूरे साल में ना आपने खर्चा किया, ना आपको इनकम है, ना आपने किसी को पेमेंट किया, तो क्लोजिंग कैश इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए? सेम का जीरो, सेम 100 हो जाएगा. सो सेम 100 का 100 रहेगा. अच्छा, तकलीफ आपको लाइफ में कभी होएगा अगर ये 100 के आगे डॉलर का साइन है, तो आपके बुक्स में एक्चुअली कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ ही नहीं. आपके पासबुक में साल के बिगिनिंग में भी $100 दिख रहा है, पासबुक में साल के एंड में भी $100 दिख रहा है. बट अपने क्या करते हैं? अपने इंड एस 21 लगाने बैठते हैं. इंड एस 21 फॉरेन एक्सचेंज का स्टैंडर्ड है. वो बोलता है बैंक इज अ मॉनिटरी आइटम, हैज टू बी कन्वर्टेड एट क्लोजिंग रेट. क्लोजिंग रेट पे अपने कन्वर्ट करने जाते हैं तो ये 50 का रेट है तो ये हो जाता है 5000. ये 60 का रेट है, होता है 6000. आपके बैलेंस में आप डॉलर कैश तो दिखा देनी हो, आपको तो हर एक चीज रुपीज में दिखाने का. आपका सीएफओ आता है जीरो, सीएफआई आता है जीरो, सीएफएफ आता है जीरो. अपन बोलते हैं एक्चुअली कोई कैश मूवमेंट हुआ ही नहीं. आप बैंक का पासबुक देखो, पूरा 12 महीना खाली है, बट पासबुक डॉलर में बना है. तकलीफ है, शेयर होल्डर बैलेंस शीट देखता है, उसको दिखता है ओपनिंग कैश 5000, क्लोजिंग कैश 6000. अभी वो बोलता है कैश बढ़ा है. क्यों बढ़ा है? अपने पास आंसर ही नहीं है, बिकॉज एक्चुअली तो कुछ चेंज हुआ नहीं. कोई भी आइडियली इफ कैश चेंजेस देयर हैज टू बी सम कैश फ्लो ना. आपके बैंक पासबुक में कुछ तो एंट्री होना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे तो बैंक के पासबुक के एंट्री के बिना ही चेंज हो रहा है. क्यों बढ़ा है आपके हिसाब से? फॉरेन एक्सचेंज गेन, चलो सही है, बट वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे दिखाएंगे? किस में दिखाएंगे? कैन यू शो इट एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग? नो, बिकॉज इट इज नॉट अ कैश फ्लो ओनली. कैश फ्लो हुआ तो बैंक के पासबुक में कुछ तो आना चाहिए ना. बैंक के पासबुक में $100 ही दिख रहा है. तो अपने को अगर 1000 दिखाने का अपन मानते हो अनरियलाइज्ड फॉरेन एक्सचेंज गेन, बट वो दिखाएगा किधर कैश फ्लो स्टेटमेंट में? इन विच कैश फ्लो विल यू शो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग और नन? किधर क्या बनाएंगे अपन? पीएल में अरे पीएल बराबर है, बट कैश फ्लो टैली नहीं हो रहा है ना आपका. पीएल में तो जिधर जाएगा वो जाएगा, इट विल बी अपियरिंग एज अगेन. वो पीएनएल है, पीएल में जाएगा जिधर जाना है उसको. बट अपने को कैश फ्लो भी तो टैली करवाना होता है ना. अपने क्लाइंट्स में देखा कैश फ्लो टैली होता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश टैली होना चाहिए. आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश टैली नहीं हो रहा है, और एक भी कैश फ्लो हुआ नहीं है. पीएल में जाएगा, उससे में जाएगा सेकेंडरी है. कैश फ्लो स्टेटमेंट में किधर जाएगा? तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग दिखाएगा. एक्सेप्शनल में जाएगा, बट एक्सेप्शनल दिखाएगा किधर? इट हैज टू बी शोन इन सम कैश फ्लो, राइट? ऑपरेटिंग में दिखा देगा. हाँ, एक्सेप्शनल आइटम कर. एफसीटीआर है ही नहीं. ये तो एक्चुअली आपका खुद का कैश है, आपके पास कोई फॉरेन सब्सिडरी भी नहीं है. आपका एफसीएनआर अकाउंट का बैलेंस है ये. नहीं, आप कोई भी कैश फ्लो में नहीं दिखा सकते हो उसको. यू हैव टू शो इट एज अ रिकंसिलिएटरी आइटम. यू हैव टू शो इट एज अ रिकंसिलिएशन. यू कैन नॉट क्रिएट अ कैश फ्लो व्हेन देयर इज नन. एंड हेंस ये आपके 000 ही दिखते रहेंगे. इनफैक्ट यहाँ पे जब भी आपका 5000 रहेगा, यहाँ पे अपन रिकंसिलिएशन दिखाएंगे प्लस unrealized. Remember, it is a difference due to remeasurement of cash balances and not because you have earned 1000. If you show it in some cash flow, investor मानेगा हाँ, जैसे आपका बैंक का अकाउंट है, तो बैंक के अकाउंट में बोलेगा हाँ, साल के बिगिनिंग में 5000 का बैंक बैलेंस था, वो 1000 का शायद इंटरेस्ट मिला रहेगा, तो क्लोजिंग में 6000 हुआ है. बट एक्चुअली दैट इज बिकॉज 1000 का कैश फ्लो हुआ है ना.
यहाँ पे तो आपका मूवमेंट हुआ ही नहीं है, तो ये तो सिर्फ आपके बुक्स में रीमेजरमेंट के वजह से हो रहा है, वो किधर भी जाएगा वो इररिलेवेंट है, बट वो कैश के वजह से हो रहा है। रिमेंबर दिस इज ओनली फॉर कैश बैलेंस। ये डेटर वेटर में होगा तो बात अलग है, ये कैश बैलेंस का है। डेटर में होगा तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है। यहां पे अनरियलाइज्ड फॉरेक्स गेन करके अपन सेपरेटली ₹1000 दिखाएंगे, तो शेयर होल्डर को समझेगा कि अच्छा पूरे साल में कुछ कैश फ्लो हुआ नहीं है, बट वो डिफरेंस इसके वजह से बिकॉज कैश खुद ही रीमेजर हुआ, तो इट इज नॉट एन एडिशनल कैश फ्लो, इट इज जस्ट रीमेजरमेंट ऑफ कैश। सो वेयर आर वी गोइंग टू शो दिस एज अ पार्ट ऑफ रिकंसिलिएशन इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कुछ वाले पढ़ते हैं अपने को? अरे यस और नो? यस, विल गिव द हेडिंग इंड एज 7 एंड राइट डाउन Roman point 1 कैश इक्विवेलेंट्स। Cash equivalents. Cash equivalents, underline. Cash equivalent means investments which can be easily converted into a known amount of cash, into a known amount of cash within a short period of investing the same. नेक्स्ट लाइन आएगा की पॉइंट्स। पॉइंट 1, liquidity. Usually investment should be marketable. And highly liquid. And highly liquid. And there should be an insignificant risk. Of changes in value. नीचे पर लिखेंगे टाइम फ्रेम, नया पॉइंट, टाइम फ्रेम कोलन 3 months from date of acquisition. 3 months from date of acquisition. Underline date of acquisition. Date of acquisition. उससे नीचे लिखिए पॉइंट 3 equity shares. Colon. They do not have a maturity date. And hence
and hence can never be a part of cash equivalents. Can never be a part of cash equivalents. बराबर. सेंटर ऑफ द पेज लिखने का बैंक ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट. इसका अपन 2 स्प्लिट्स बनाएंगे. मेक 2 स्प्लिट्स. अच्छा, एक पार्ट पे अपन लिखेंगे पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट. अच्छा, इफ इट इज अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट तो किधर जाएगा? कैश इक्विवेलेंट में या कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग में? कैश इक्विवेलेंट. राइट डाउन कैश इक्विवेलेंट. आपने समझेगा कैसे पार्ट ऑफ फ्लक्चुएटिंग बैलेंस. राइट डाउन ब्रैकेट के अंदर when there are fluctuating balances, when there are fluctuating balances, when there are fluctuating balances, fluctuating balances between positive and negative, between positive and negative, पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग लिखेगा राइट हैंड साइड पे. पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एरो करना. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. Into bracket, in case bank OD has a continuous negative balance. बराबर. नेक्स्ट पॉइंट राइट डाउन. फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस. फॉरेक्स गेन स्लैश लॉस. Forex gain slash loss on foreign currency cash. On foreign currency cash. Foreign currency cash. Colon. This gain slash loss pertains. This gain slash loss pertains to cash and cash equivalents. To cash and cash equivalents, and hence should not be included. And hence should not be included in cash flow from operations. In cash flow from operations slash investing slash financing. Full stop. Instead, comma, it should be shown. It should be shown as a reconciliation item. Reconciliation item between opening and closing. Between opening and closing
कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट्स, बराबर, फेयर. देन राइट डाउन सेंटर ऑफ द पेज इनकम टैक्स पेड. अच्छा, इनकम टैक्स पेड अपन किधर से लेस करते? ऑपरेटिंग ऑलवेज. वेल नॉट नेसेसरी. इफ इनकम टैक्स इज लाइक डीडीटी फाइनेंसिंग. अच्छा, इफ आपने लैंड बेचा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा. इन्वेस्टिंग. राइट डाउन सेंटर ऑफ द पेज इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड. दो स्प्लिट्स आएंगे. pertaining to, left hand side, pertaining to investing / financing activities. Example, capital gains, comma DDT, comma DDT. इसके नीचे एरो करेगा. अच्छा, ये किधर से अपन डिडक्ट करेंगे? इनकम टैक्स पेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज रिस्पेक्टिवली. राइट डाउन डिडक्टेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग / financing. Right hand side, all other cases. All other cases. क्या लिखेंगे? Operating. Operating. Are you getting this? सम्स पे जाते हैं इसके. गो टू क्वेश्चन नंबर 10, गो टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज 10. क्वेश्चन नंबर 1 पेज 10. Are we there? Company has provided the following information regarding various assets held by the company on 31st March 17. Okay, find out the which of the following items will be a part of cash and cash equivalents for the purpose of preparation of cash flow statements as per guidance provided in Ind As 7. So we have to see कि Ind As 7 में कोई cash flows कौन से cash equivalents है या नहीं. We'll go to point 2 first. Point 2, fixed deposit with SBI, 12% 3 years maturity on 1st of January 20. Is it CE? Write down not CE. Point 2 बाजू में लिख कर रखेगा not CE. Point 3, fixed deposit with HDFC, 10% original term was for 2 years, but maturity was 30th of June 2017. Is it CE? No. Again, unless otherwise given, आपने पूरे term पे लिया रहेगा, that is 2 years. Not CE. बाजू में लिखेंगे not CE. Point 4, redeemable preference shares in ABC, the redemption is due on 30th of April 17. अभी अपने को date of acquisition दिया नहीं. So it's a conditional answer. If your date of acquisition is after 31st January, then it is CE, otherwise it is not. Write down CE if acquisition date is after 30th Jan 17, else not CE. अच्छा 5, 6 and 7 है. कैश बैलेंसेस एट वेरियस बैंक्स. आपको देखो बैंक कोई भी हो, इंडियन हो, इंटरनेशनल हो, फॉरेन ब्रांच हो, क्या फर्क पड़ता है? इज इट ऑल सी? Yes, so you have 5, 6 and 7. These are all CE. 5, 6 and 7 they are all CE. एक में इंडियन बैंक्स है, एक में इंटरनेशनल ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक्स है और एक में फॉरेन बैंक्स ही है. इट इज स्टिल कैश.
Then bank OD at SBI Fort, temporary overdraft which is payable on demand. CE or not CE? CE. Because it temporary, into bracket temporary. उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल्स, इसका मैच्योरिटी 90 डेज है, तो आप कभी भी अक्वायर करो वो तो 90 डेज से शॉर्टर पीरियड ही होने वाला है. एंड ट्रेजरी बिल्स मींस गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सो रिलायबल वैल्यू रहेगा. सो ये क्या लिखेगा अपन? सीई. सीई. देन यू हैव पॉइंट 1 जो अपना रह गया था, गवर्नमेंट बॉन्ड विच इज 5% अंडरलाइन ओपन एंडेड. तो यानी यहाँ पे इसका मैच्योरिटी डेट होगा या नहीं होगा? मैच्योरिटी डेट होगा ही नहीं. द मेन पर्पस वाज टू पार्क द एक्सेस फंड्स फॉर अ टेम्पररी पीरियड. सी में आएगा, राइट डाउन सीई. आर यू गेटिंग दिस? Question 2, 3, 4 very basic questions is just to get you used to the items which are there in the cash flow statement. In all of these questions you have to identify whether it is operating, investing, financing. अपन O है, F है या फिर I है, वैसा लिख के रखेंगे. Are you getting this? अच्छा, ओपन एंडेड के ऊपर आप सिर्फ इसका मीनिंग शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दो. ओपन एंडेड के ऊपर अंडरलाइन करके, ओपन एंडेड के ऊपर अंडरलाइन करके, ओपन फॉर एंट्री स्लैश एग्जिट. एंट्री स्लैश एग्जिट. चलो, आर वी डन? Okay, we'll go to question number 2. We'll go to question number 2. From the following transactions, identify which transactions will be qualified for calculation of operating cash flow if the company is in the business of trading of mobile phones. First, receipt from sale of mobile phones. Operating, O लिख के रखेंगे. Purchase of mobile phones from various companies. O. Employee expenses paid. O. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड. ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग. अरे आप मुद्दे पे फोकस करो प्लीज. एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस पेड, ऑपरेटिंग. क्रेडिट सेल्स ऑफ मोबाइल. क्रेडिट सेल्स ऑफ मोबाइल क्या लिखेगा? इट्स अ नॉन कैश. रिमेंबर इट्स क्रेडिट सेल्स. वी टेक कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स. दिस इज क्रेडिट सेल्स. इट इज नॉट अ कैश फ्लो. राइट डाउन नॉन कैश. Miscellaneous charges received from customers for repair of mobiles. Operating. Warranty claims received from companies. Operating. Loss due to decrease in market value of closing stock of old mobile phones. Non-cash. ये तो सिर्फ आपका राइट ऑफ है, इसका आपका कैश फ्लो नहीं हो रहा है. जैसे रिडक्शन इन एनआरवी. नॉन कैश. पेमेंट टू सप्लायर्स ऑफ मोबाइल फोन्स. Operating. Depreciation on furniture. Non-cash. Interest paid on cash credit facility of bank. Financing. Profit on sale of old computers and printers in exchange of new laptop and printer.
नॉन कैश, इट इज इन एक्सचेंज, बार्टर है, इट इज इन एक्सचेंज. अगर वो इन एक्सचेंज नहीं होता तो फिर वो इन्वेस्टिंग बनता, बट अदरवाइज इट इज नॉन कैश. एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, ऑपरेटिंग, बिकॉज इट इज फ्रॉम कस्टमर्स. सेल्स टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटी पेड, operating, unless otherwise given. Sales and excise both are linked to operations. Proposed dividend for the current financial year. Well, if it is just proposed, it is non-cash. If it is paid, it is financing. Write down बाजू में. Non-cash if merely proposed. And financing when paid. When paid. Question number 3. The following transactions are taken underline from a private sector bank operating in India. Identify which of them will be classified as operating and which would be classified as investing. Remember, bank के लिए loan देना, deposits लेना, interest, all of these are operating in nature. They are not investing in nature. Yes. Interest on loans received, operating. Interest paid on deposits, operating. Deposits accepted, operating. Loans given to customers, operating. Loans repaid by customers, operating. Deposits repaid, operating. Commission received, operating. Lease rentals paid for branch, operating. It is also paid in the regular course of business, rent expense जैसा. Service tax paid, operating. Furniture purchased for new branches, investing. Implementation of upgraded banking software. इंटेंजिबल असेट होता है, सॉफ्टवेयर अपन ने नया सॉफ्टवेयर डाला, अपग्रेड किया, तो वो तो इंटेंजिबल में जाएगा. इन्वेस्टिंग. परचेज ऑफ शेयर्स इन 100% सब्सिडरी टू रीओपन ब्रांच इन अबू धाबी. इन्वेस्टिंग. यू आर परचेसिंग इन्वेस्टमेंट्स. न्यू कार्स परचेज फ्रॉम होंडा इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड कार्स, ऑन कैश, बार्टर. Provident fund paid for employees, operating. Issued employee stock options. Well, when you are issuing it, it is non-cash, but when they will be exercised, it will be financing. Write down. Non-cash when issued, comma, financing when exercised. When exercised. Barabar. Question 4. From the following transactions taken from parent company having multiple businesses and multiple segments, identify which transactions will be classified as operating, investing and financing. So you are no longer a bank. अच्छा, just before we start this question, last question में ना इंस्टीट्यूट के आप स्टडी मटेरियल में देखोगे तो एक चीज इनकंसिस्टेंट है. जो भी डिपॉजिट्स के साथ लिंक था, देव ऑल शोन इट एज फाइनेंसिंग, विच आई थिंक इज नॉट करेक्ट. अगर आप लोन्स गिवन ऑपरेटिंग मान रहे हो तो डिपॉजिट्स आर टेकन अगेंस्ट विच लोन्स आर गिवन, वो भी ऑपरेटिंग होना चाहिए. बैंक्स की बैलेंस शीट खोल के देख सकते हो, दे आर टेकन एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली. बट विल जस्ट राइट अ क्लैरिफिकेटरी नोट. सो इफ यू रिफर द इंस्टीट्यूट मटेरियल इफ एंड व्हेन, you should know that there is a conscious difference in the solutions. Yes, write down reference note एक लिखेंगे. क्वेश्चन 3 के कॉन्टेक्स्ट में ICAI, क्वेश्चन 3 के कॉन्टेक्स्ट में ICAI has taken cash flows. ICAI has taken cash flows linked to deposits as financing. Full stop. This is incorrect. As for a bank, this is operating in nature. As for a bank, it is operating in nature. बराबर. यस. गो टू क्वेश्चन 4 देन. अपन ट्रांजैक्शंस पे जाते हैं. पॉइंट 1, इशूड प्रेफरेंस शेयर्स. क्या आना चाहिए? फाइनेंसिंग. परचेज द शेयर्स ऑफ 100% सब्सिडरी, इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम शेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, इन्वेस्टिंग. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग. डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज, बोनस शेयर्स इशूड,
Non-cash. Reserves account debit to share capital. Non-cash item. Non-cash. Purchase license for manufacturing special drugs. License अपन intangible asset करके दिखाते. Yes, so they should be investing. Royalty received from goods patented by the company. Royalty received, it is like royalty income. जैसे अपन for example Microsoft sells software licenses, Tally sells software licenses, तो अपन खरीदते हैं तो उनको royalty income मिलता है, license fees मिलता है for selling their own goods. Is it operating or investing? Operating. Rent receipt from letting out, and letting out is not main business. Investing, letting out is not main business. अगर main business होता तो अपन उसको operating में ले सकते थे. Interest received from advances given. Is it a bank? No, which means किधर जाएगा? Investing. Advances given. When you give the investment, this is investing in nature. So interest on those investments will go in investing. Interest received from advances given. This is क्या लिखे अपन? Investing. Dividend paid. Financing. Interest paid on security deposits. Financing. Purchase goodwill. Investing. Acquired assets of company by issue of equity shares, not parting with any cash. Non-cash. Interim dividends paid. Financing. Dissolved 100% subsidiary and received the amount in final settlement. Investing. Are we getting this? Achha, go to the next question. Question number 7. Question number 7 on page 13. Question 7, page 13. X Limited has paid advance tax amounting to 5,30,000 during the current year. Out of the above paid tax, 30,000 is paid for tax on long-term capital gains. Under which activity will the above tax be classified in cash flow statement? अपने टोटल टैक्स कितना पे किया? 5,30,000. उसमें से कितना कैपिटल गेन्स के लिए? 30,000. कैपिटल गेन्स इज जनरली ऑन सेल ऑफ असेट्स. किधर जाना चाहिए? इन्वेस्ट. बैलेंस कितना बचता? किधर जाएगा? ऑपरेटिंग. राइट डाउन बिलो दिस. 30,000 इन्वेस्टिंग, 5 lakhs operating. 5 lakhs operating. बराबर. ओके, उसके ऊपर क्वेश्चन 6 देखते हैं एक बार. A firm invests in a 5-year zero coupon bond of another company. If I'm investing in a zero coupon bond, is that a financing activity or investing activity? Investing. I'm investing. Zero coupon bond है तो every year interest मिलेगा क्यों? नहीं, but income record होएगा क्यों? Yes, EIR के बेस पे record होएगा. Is that a cash flow? No, but at the end अपने को पूरा पैसा आएगा. Yes. So cash flow statement में कभी आएगा? Year 0 पे कुछ आएगा क्या? जब अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं तभी आएगा. उसके बाद year 1, 2, 3, 4 कुछ भी नहीं. Then year 5 में आएगा. The entire value, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है, प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूडेड है. बराबर क्या नहीं? इफ यू वांट यू कैन शो देम सेपरेटली एज वेल. आगे देखते हैं. Of another company with a face value of rupees 10 lakhs by paying 5 lakhs. So that will be your cash flow from investing. The effective rate is 15%. The firm recognizes proportionate interest income in its income statement through the period of the bond. Okay? ये अपना financial instruments के हिसाब से होगा. Based on the above information, answer the following question. How will the interest income be treated in cash flow statement during the period of the bond? Should you consider or should you ignore? Ignored. Write down ignored into bracket non-cash. Ignored into bracket non-cash. Non-cash. Next you have subpoint B on maturity, whether the receipt of 10 lakhs should be split between interest income and receipts from investing activity. Well, you can show them entirely or you can show them as a split, but you have to show them within investing activity only. Write down. Should be shown in investing activity into bracket interest
5 lakhs. Repayment of principal colon. Repayment of principal colon 5 lakhs. Are you getting this? Fair. Go to question number 10, please. Question 10. Page 14, question number 10. X Limited acquires fixed asset of 10 lakhs from Y Limited by accepting the liabilities of 8 lakhs of Y and balance amount it paid in cash. How X Limited will treat all the items in cash flow statement? Will 10 and 8 both appear? नहीं तो क्या appear करेगा? 2 lakhs. 2 lakhs will appear as cash flow from investing. Write down next to that. Net 2 lakhs into bracket 10 minus 8 bracket closed to appear as cash flow from investing. बराबर. Okay, then you go to question number 11. Question number 11. Z Limited has no foreign currency cash flow for the year 2017. It holds some deposits in a bank in US. The balance as on 31st December 17 and 31st December 18 were $1 lakh and $1 lakh 2000 respectively. The exchange rate on 31st December 17 was USD 45 per dollar. The same as on 31st December 18 was rupees 50 per USD. The increase in the balance was on account of interest credited on 31st December 18. Thus, the deposit was reported at rupees 45 lakhs in the balance sheet as on 31st December 17. It was reported at 51 lakhs on the balance sheet as on 31st December 18. अच्छा difference दिख रहा है अपने को? अच्छा, is this entirely due to foreign exchange difference? No, there is some genuine cash that you have earned. So, is there a cash flow during the year? Yes, कितना cash flow है डॉलर्स में? $2,000 अपना बैंक बैलेंस 2000 से एक्चुअली बढ़ा है, तो क्यों बढ़ा रहेगा? इंटरेस्ट. तो आपका एक्चुअल बैंक के पासबुक में $2,000 बढ़ेगा. That is a cash flow, let us say. Are we getting this? So your net changes in cash will be reflected by $2,000. But so अगर अपन ओपनिंग कैश देखें तो 45 लाख रुपीस था. अगर आप $2,000 भी चेंज करो 50 रुपए के रेट पे तो हार्डली कुछ लाख रुपया पड़ता. So closing should ideally come to 46 lakh rupees. Is it coming to 46 lakh rupees? Why is it not coming? Foreign exchange difference on the original $1 lakh cash. ये original $1 lakh cash है, उसमें 5 rupees का difference आ रहा है. Are yes or no? Okay. It was reported at rupees 51 lakhs in the balance sheet as on 31st December 18. How will these transactions presented in the cash flow for the year ended 31st December 18 as per Ind As? So इसके नीचे अपन एक छोटा सा extract बना सकते हैं. There will be a net changes in cash and cash equivalent. अच्छा, अपने कितना एक्चुअल चेंजेस हुआ रहेगा अपने यहाँ पे? $2,000. वो एक्चुअल इंक्रीज इन कैश है. अच्छा, इंटरेस्ट अराइज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और यूजुअली एट द एंड ऑफ द ईयर. पासबुक में एंड ऑफ द ईयर में क्रेडिट होएगा. तभी रेट क्या चल रहा है? 50. एंड हेंस देयर इज अ नेट चेंज इन कैश ऑफ रुपीज 1 lakh टू विच यू विल एड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये अपने को दिया हुआ है क्या ऑलरेडी? 45 lakhs. अच्छा, क्लोजिंग अपने को दिया हुआ है एज 51 lakhs. सो जो डिफरेंस है दैट इज अनरियलाइज्ड फॉरेक्स गेन ऑन forex cash, that is rupees 50 per dollar minus rupees 45 per dollar into कितना डॉलर आना चाहिए?
1 लाख या 1 लाख 2? 1 लाख। देखो $2,000 तो आपने ऑलरेडी 50 के रुपए के बेस पे ही रिकॉर्ड किया, तो जो बचा $1 लाख वो रिस्टेटमेंट पे जाएगा, बराबर क्या नहीं? एंड दिस कम्स टू ₹5 lakhs. And hence your closing cash and cash equivalent comes to ₹51 lakhs. बराबर। क्वेश्चन 9 इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कंपनी, दिस इज क्वेश्चन 9, कंपनी ए acquires 70% of equity shares in company B on July of 2011. The consideration paid for the transaction is as below. Cash consideration of 15 lakhs. Okay. 2 lakh equity shares having a face value of ₹10 and a fair value of ₹15. On the date of acquisition, company B has cash and cash equivalent balance of 2,15,000 in its books of accounts. On 10th of October 2012, company A further acquires another 10% stake in company B for a cash consideration of ₹8 lakhs. Advise how the above transactions will be disclosed or presented in the cash flow. Read the question again, please. अच्छा, जुलाई 11 में अपन ने इन्वेस्टमेंट खरीदा। देखो दो टाइप के कैश फ्लो हो सकते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन कैश फ्लो, एक होता है कंसोलिडेटेड कैश फ्लो। अपन ने कितना परसेंट स्टेक खरीदा? 70%. सो डू यू अक्वायर कंट्रोल इन द स्टैंड अलोन बुक्स? डज इट मैटर डू यू हैव कंट्रोल और नॉट? नो. सो इन द स्टैंड अलोन बुक्स आपने क्या एंट्री मारा होगा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अपने को मेनली देखना है बैंक कितने से जा रहा है, कितने से बैंक अफेक्ट हो रहा है? 15 लाख। अच्छा, सामने होगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बराबर क्या नहीं? अपने शेयर्स भी इश्यू कर रहे, बट डज इट मैटर कितने शेयर्स इश्यू कर रहे? अच्छा, इन योर स्टैंड अलोन बुक्स व्हाट इज द कैश फ्लो? व्हाट विल यू शो दिस कैश फ्लो एज? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. सो दिस विल बी शोन एज अ CFI एज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट. परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाएंगे अपन? परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने पे दिखाएगा? 15 lakhs. अच्छा, CFS में भी सेम ही होएगा? आपका एंट्री सेम ही आता है क्या CFS में? नहीं तो क्या एंट्री आएगा? नेट असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी नेट असेट का अमाउंट है, गुडविल इफ एनी वो भी डेबिट हो जाएगा. 2 सामने अपन क्या पे कर रहे हैं? बैंक. हाउ मच आर वी पेइंग? 15 lakhs. 2 अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम. अरे यस और नो? विच मीन्स यहां पे अपन किधर दिखाएंगे ये ट्रांजैक्शन को? कैश फ्लो में किधर दिखाएंगे? अगेन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग. कैन यू कॉल दिस एज परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और परचेज ऑफ बिजनेस? Purchase of business. You will have to show it as purchase of business. What is the amount? Sorry? That is right. Remember, there is a hidden adjustment here. Question tells you this net asset will also include bank balance, right? Which means यहाँ पे 2,50,000 डेबिट होएगा. देखो इन स्टैंड अलोन बुक से डेबिट आएगा नहीं. अपन इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट जब भी अपन कंसोलिडेशन करते हैं तभी अपन नेट असेट्स टेक ओवर करते हैं, तो इन दैट नेट असेट बैंक भी टेक ओवर हो जाएगा. एंड हेंस यस यू आर स्पेंडिंग 15 lakhs. But then you are also getting 2,15,000, and as a result, what is your net cash outflow? 12,50,000. So what will appear as cash flow from operations is going to be 12,50,000. 12,50,000. Are we getting this?
स्टैंड लोन में भी अपन लगे 12,50,000 दिखा देते नहीं, स्टैंड लोन में अपने बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा ही नहीं, टू बैंक जा रहा है 15 लाख डेबिट आ रहा है नहीं, बट यहाँ पे तो डेबिट आ रहा है ना। अच्छा, इन अक्टूबर 2012 अगेन इन एसएफएस एंड सीएफएस, अक्टूबर 2010 में अपने कितना स्टेक अक्वायर किया, कितना परसेंट, 10%। इन एसएफएस अपन क्या एंट्री पास करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, कितने से डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट, 8 लाख। ये पूरा कैश यानी बैंक में ही जा रहा है क्या, यस। एंड एज अ रिजल्ट दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिंग, दिस विल बी अ पार्ट ऑफ सीएफआई, जिसके अंदर अपन दिखाएंगे परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अपना सीएफएस में क्या दिखाएंगे, दिस ट्रांजैक्शन इज ट्रीटेड एज व्हाट, परफेक्ट, इट इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ एनसीआई, एनसीआई अकाउंट डेबिट, जो भी अदर इक्विटी में बैलेंस जाएगा सब करके टू बैंक आएगा, कितना आएगा, 8 लाख। अभी इसको अपन कैश फ्लो में किधर दिखाएंगे, परफेक्ट, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। रिमेंबर इट इज नॉट अ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। एनसीआई का परचेस ऐसा नहीं माना जाता अपन इन्वेस्ट कर रहे हैं, एनसीआई तो ओनर है, तो ओनर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे वो इक्विटी के सेक्शन में अफेक्ट होता है, तो ये तो फाइनेंसिंग ट्रांजैक्शन। इट इज लाइक सेइंग दैट इफ यू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स or by paying cash, you're saying that this is a transaction with the providers of capital. It's a financing transaction and not investing transaction. And hence यहाँ पे अपने को CFF करके दिखेगा, purchase of NCI बोल के, कितना दिखेगा, समझ में आया अपने को पूरा, yes, write this down, write down. Question number 9, इसका डिटेल सोल्यूशन लिखेगा। 70% stake into bracket July 11. 70% stake into bracket July 11. Next line. In standalone statements into bracket SFS. Bracket closed. This will be shown as purchase of investments. This will be shown as purchase of investments. Into bracket investing activity, bracket closed. At rupees 15 lakhs. At rupees 15 lakhs. Next, in consolidated cash flow, in consolidated cash flow, comma, the transaction would be shown as acquisition of business. As acquisition of business. Into bracket investing activities. Bracket closed. However, as net assets of company B are taken over, as net assets of company B are taken over, comma, its net cash of 2,50,000 will also be taken over. Will also be taken over. Full stop. Hence, the net cash flow from investing, would be 12,50,000.
12 lakh 50 into bracket 15 lakhs minus 2 lakh 50 bracket closed. इसके नीचे आएगा 10% स्टेक, 10% स्टेक into bracket October 12, October 12. Next line, in SFS, comma, in SFS, comma, this transaction should be treated as purchase of investments. Should be treated as purchase of investments. Purchase of investments into bracket investing activity bracket closed. And a cash flow of rupees 8 lakhs should appear. Cash outflow of rupees 8 lakhs should appear. Next paragraph, in CFS, comma, the transaction is treated as purchase of NCI. The transaction is treated as purchase of NCI. Purchase of NCI, and hence would be treated. बुक है क्या? बुक है आपको? You had left a book here. पंकज के पास है वो. Treated as purchase of NCI and hence would be treated as financing activity. Be treated as financing activity. बराबर? Yes, good question. Okay, go to the next question. यहाँ पे क्या लिखने का है? ये लिखा तो सही अपन ने सब. ले लो. Okay. You have, okay, we'll go to, अरे अभी कैसे ले गए? मैं दूंगा ना, अभी immediately थोड़ी ना निकालने का रहता. Okay. Go to question number 5. This is on cash flow statement. यहाँ पे अपने को actually cash flow from operations, cash flow from operations under something called as direct method and indirect method, दोनों prepare करने का. Remember you had something called as direct method and indirect. Direct में क्या होता है? You directly take the cash flow from operations के अंदर receipt from customers, payment to suppliers, payment for expenses, you directly take it. However, when you look at the indirect method, अपन exactly opposite करते हैं. अपन बोलते हैं कि यार ideally net profit should be cash flow. However, if net profit is not equal to cash flow, why is it not equal to cash flow? Because उसके अंदर कुछ non-cash item है. Adjustment number 1. There can be certain non-cash items like depreciation. Point number 2. There can be some non-operating items like interest paid, profit and loss on sale of assets. ये सभी चीज आपके investing activity या financing activity में जाते हैं. However, we still deduct it from net profit, but we should not be deducting it from cash flow. तो अपन क्या करते हैं? We will adjust the non-operating items. Adjustment number 2. And third is the non-cash items. Non-cash items is point 1. Non-operating items is point 2. And then working capital items is point 3. Working capital items कौन सा रहता है? Stock है, debtors है, creditors है. Remember we had a rule. Current assets are generally inversely adjusted. Current liabilities are directly adjusted. So increase in current assets अपन subtract करते हैं. Reduction in current assets अपन add करते हैं. Similarly, current liability is directly related. An increase in current liability, you will add. A reduction in current liability, you will reduce. Are you getting this? Yes. So ये तीनों अपन adjust करेंगे. उसके बाद अपन tax payment less करते हैं. We start at PBT and then last में tax payment less करते हैं. That should give you your cash flow from operations. Direct method start at PBT, profit before tax.
Make adjustments for point 1 non-cash items, point 2 non-operating items, point 3 working capital items. Then you deduct tax paid. In the direct method, you directly take the cash flows. When we say directly take the cash flows, क्या direct cash flows होने चाहिए? Receipt from customers, payment to suppliers, payment for expenses. ये अपन direct items लेते हैं. Accordingly, we prepare the cash flow statement. Are we getting this? Yes. Go to question number 5. Question number 5. Find out the cash from operations by direct method and indirect method from the following information. You have been given operating statement, sales less COGS, admin, depreciation. उसमें से next page you have interest paid, loss on sale of assets, profit before tax and then tax. Balance sheet is also given, shareholders funds, non-current liabilities, creditors for expenses, proposed dividend. Assets के अंदर fixed assets, investment, inventories, debtors and cash, and then you have total. अपने को बनाने का क्या है यहाँ पे? We just have to prepare the cash flow from operations, not the entire cash flow statement from operations. But बनाने का अपने को दोनों methods हैं. Are you getting this? Let us first try to start with the indirect method. Indirect method अपन किससे start करते हैं? What is the number? Net profit. Usually take before tax because last में अपन tax paid separately दिखाते हैं. Write down question 5. Question 5. Question 5. Calculation of cash flow from operations into bracket indirect method. Indirect method. Indirect method. अच्छा इनडायरेक्ट मेथड में अपन स्टार्ट करेंगे पीबीटी के साथ. डू वी हैव द पीबीटी? यस. हाउ मच इज दैट? व्हाई शुड द पीबीटी बी एडजस्टेड? आइडियल तो अपन मान लेंगे पीबीटी इज द कैश फ्लो. अब हम बोलते नहीं यार पीबीटी में कुछ नॉन कैश आइटम भी एडजस्ट किया रहेगा. इज देयर एनी नॉन कैश आइटम? व्हाट? डेप्रिसिएशन. यू विल ऐड बैक डेप्रिसिएशन. हाउ मच इज दैट? 7,000. अच्छा ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड दिख रहा है. इज इंटरेस्ट पेड डिडक्टेड वेल कैलकुलेटिंग 83? बट इज इंटरेस्ट पेड अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी? फाइनेंसिंग. सो शुड इट बी डिडक्टेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? नो. एंड हेंस अपने को क्या करना पड़ेगा? एड बैक इंटरेस्ट. एड बैक इंटरेस्ट पेड. 3,000 आएगा. अच्छा व्हाट अबाउट लॉस ऑन सेल ऑफ असेट? ये तो लेके भी जाने का रहेगा तो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए. एंड हेंस यू विल ऐड बैक लॉस ऑन सेल ऑफ असेट. कितना अमाउंट है? 2,000. सो अपन ने लॉस एडजस्ट कर दिया, इंटरेस्ट एडजस्ट कर दिया, डेप्रिसिएशन. शुड एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस बी एडजस्टेड? नो. व्हाट अबाउट सीओजीएस? नो. व्हाट अबाउट सेल्स? नो. दे आर कोर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. But apart from that, is there anything else that you need to take from balance sheet? What? Working capital adjustments. Write down working capital adjustments. Remember, increase in current assets you will deduct, increase in current liabilities you will add. Will shareholders funds or non-current liabilities have any impact here? No, they will not have impact. वो होगा भी तो financing activity में आएगा. Will creditors have any impact here? Yes. Creditors क्या हो रहे हैं? Increase या reduce? Increase in creditors अपन add करेंगे, less करेंगे? Add increase in creditors into bracket 12 minus 8 and this comes to 4,000. Creditors for expenses increase हो रहे reduce हो रहे? Increase means add या less? Add liability. Increase in creditors for expenses into bracket 10,000 minus 7,000 equals. अच्छा प्रपोज डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है रिड्यूस हो रहा है? आना चाहिए नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? फाइनेंसिंग है. अगर वो पेड होगा भी तो यहां से एडजस्ट होगा ही नहीं. इट इज फाइनेंसिंग. बाजुओं पर लिख के रखते फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग.
अगर फाइनेंसिंग में अपन जनरली मानते हैं ओपनिंग प्रपोज डिविडेंड इज पेड ऑफ एंड क्लोजिंग इज आउटस्टैंडिंग, सो अपन जो भी अगर कुछ पे ऑफ भी हुआ है तो फाइनेंसिंग में दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं दिखाते. अच्छा, विल फिक्स्ड एसेट चेंजेस कम हियर? नो. इन्वेस्टमेंट चेंजेस? नो, दे विल गो इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. विल इन्वेंटरी चेंजेस कम? Yes. अच्छा, is it increasing or reducing? Reducing. So this is reduction in inventory. अपन ऐड करेंगे लेस करेंगे? ऐड. करंट एसेट से ऑपोजिट जाएगा and hence this will be 13 minus 12. This is 1000. अपन क्या करेंगे? ऐड. अच्छा, इन्वेस्टमेंट का क्या करना है? इन्वेस्टमेंट में कुछ भी नहीं आएगा. डेटर्स का क्या करना है? इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज इन डेटर्स क्या करेंगे? रिड्यूस. लेस इंक्रीज इन डेटर्स. इंक्रीज इन डेटर्स कितना अमाउंट आना चाहिए? 10 minus 7 comes to 3000. अच्छा, कैश इंक्रीज हो रहा है, क्या करेंगे? वो तो क्लोजिंग में एडजस्ट होगा नहीं. नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो आपका कैश फ्लो का आउटकम है, वो यहाँ पे आप एडजस्ट करोगे तो फिर चेंज आएगा कैसे? It will be the outcome of cash flow statement, does not go in cash flow from operations, and hence this takes care of everything. Just see if you have missed anything. आपने स्टार्ट कहां से किया? अच्छा, कुछ मिस हुआ है क्या? टैक्स. अच्छा, इज देयर अ प्रोविजन फॉर टैक्स इन द बैलेंस शीट? इसके लिए अपन ने इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको बोलता है स्टार्टिंग में पीबीटी से स्टार्ट करो, बिकॉज अगर कुछ प्रोविजन है पेड अनपेड है तो वो सेपरेटली दिखाना पड़ेगा. यहां पे कुछ है नहीं, विच मीन्स अच्छा इफ इट वॉज टैक्स वॉज अनपेड तो प्रोविजन फॉर टैक्स अनपेड टैक्स दिखता था. द फैक्ट दैट इट इज नॉट देयर, इट मस्ट हैव बीन पेड. अरे यस और नो? एंड हेंस यू विल हैव लेस टैक्स पेड. लेस टैक्स पेड. हाउ मच इज दैट? 30,000. एंड वी गेट CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. टोटल करने का 70,000. Are we clear with this? Non-cash adjustments, non-operating adjustments and working capital adjustments. Clear? अच्छा, now we look at direct method. Direct method में अपन क्या करते हैं? अपन ये सेम तरीके से बनाएंगे क्या? नहीं, अपन एक्चुअली डायरेक्टली एक एक आइटम देखेंगे. So the first item that you see in the income statement is sales. Is that operating in nature? Should that be considered in cash flow from operations? Can we say 5 lakhs entire sales is cash flow from operations? Why not? There it is very much possible उसमें से कुछ क्रेडिट होगा, उसमें से पैसा आया नहीं होगा. अब लोग समझेगा कैसे कि 5 lakhs में से पैसा कितना है? Debtors. You have opening debtors and closing debtors. Usually if you visualize the debtor account, so in the debtor account you have opening. कितना opening debtors है? 7,000. एंड यहां पे आता है 2 सेल्स. यहां पे कितना आएगा? 5 lakhs. एंड देन आता है क्लोजिंग. हाउ मच इज दैट? 10,000. विच मीन्स ये जो बैलेंस बचा 4,97,000. दिस मस्ट बी बाय बैंक. सो व्हाट यू विल ट्राई टू फाइंड इज नॉट सेल्स बट यू विल ट्राई टू फाइंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. अगर ये पूरा अनसोल्ड पूरा अनकलेक्टेड रहता तो शायद ओपनिंग आपका 7 lakhs है, क्लोजिंग आपका 5,07,000 दिखता था. इट इज रॉन्ग टू अज्यूम के पूरा पैसा कलेक्ट हुआ रहेगा, बट इट इज रॉन्ग टू अज्यूम कुछ कलेक्ट नहीं हुआ रहेगा. डेटर गिव्स यू दैट पिक्चर. सिमिलरली पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपको फाइंड करना है, वो कहां से पता चलेगा? क्रेडिटर लेजर से. एडमिन एक्सपेंसेस पेड फाइंड करना है, वो कहां से पता चलेगा? क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस से. आर वी गेटिंग दिस? यस, ओके. सो यू माइट प्रिपेयर दिस लेजर, अदरवाइज अपन ब्रैकेट में ही वर्किंग दिखा सकते हैं. दैट इज यू कैन शो ओपनिंग दैट इज 7 plus 5 minus 10 and you will get the answer. Are you getting this? Write down cash flow from operations into bracket direct method. Cash flow from operations into bracket direct method. Direct method. अपन स्टार्ट कहां से करेंगे इस पे? कलेक्शन. सेल्स से नहीं. यू विल हैव कलेक्शन फ्रॉम debtors. Your entire sales may not be cash flow. बराबर. What is the opening? 7,000 plus 5 lakhs less. तो कितना आता है टोटल?
अच्छा सेम तरीके पे अपन क्रेडिटर्स करेंगे क्या? क्रेडिटर्स में अपना ओपनिंग क्रेडिटर्स है कितना है 8000 प्लस ऐड क्या करते हैं अपन परचेसेस, वो है अपने पास सीओजी से अपन अज्यूम कर सकते हैं सीओजी से सेम एज परचेस नहीं, तो क्या करना पड़ेगा स्टॉक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू अ स्टॉक एडजस्टमेंट, फाइंड परचेसेस एंड देन डू द सेम वर्किंग. यस, लीव अराउंड 6 lines and write on working note 1 purchases. Working note 1 purchases. So we will have opening stock plus purchases less closing stock equals COGS. Opening stock कितना है अपना 13,000. Let us say purchases is X less closing stock is 12,000. COGS कितना 3,50,000. Therefore X equals 3,49,000. 3,49,000. अच्छा, can we say 3,49,000 is payment to creditors? No, that is purchases. तो अगर अपन क्रेडिटर अकाउंट विजुअलाइज करें, लेट अस से वी शो इट लेस ओवर हियर, लेस पेमेंट टू क्रेडिटर्स. अगर अपन क्रेडिटर अकाउंट विजुअलाइज करें तो क्या आना चाहिए ब्रैकेट में? ओपनिंग कितना है 8,000 प्लस क्या करेंगे परफेक्ट 3,49,000 माइनस 12, तो क्लोजिंग कितना आ रहा है 3 lakh. कैन वी से दिस इज द अमाउंट पेड? Yes, this is payment made to creditors. Is there anything else? Yes, expenses, payment for expenses. अच्छा, यहां पे अपन डायरेक्टली सेम वर्किंग कर सकते हैं, सेम क्रेडिटर के जैसा डेटर के जैसा, ओपनिंग प्लस expenses less closing. Yes, you have creditors for expenses also called as outstanding expenses. So at the beginning of the period you had 7,000. During the year अपन ने कितना खर्चा किया? Sorry, 55,000 plus 55,000 less closing में कितना आता? 10,000 and as a result 50. देखो यहां पे आपको 2-3 कॉम्प्लेक्सिटी आ सकता है. एक तो क्वेश्चन को प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दे सकते हैं. सो एक्सपेंसेस कैन बी प्रीपेड, कैन बी आउटस्टैंडिंग एज वेल. तो आपको और थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रीपेड का भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. कितनी बार एडमिन एक्सपेंसेस के अंदर क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इंक्लूड कर सकता है. इट माइट टेल यू एडमिन एक्सपेंसेस इनटू ब्रैकेट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो आपको बाहर निकालना है, वो तो कभी पे करना ही नहीं. अरे यस सर, यहाँ पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है वैसे. ओके, एंड इज देयर एनीथिंग एल्स? टैक्स. डू वी हैव द अमाउंट ऑफ टैक्स? Yes, less tax paid कितना है 30,000 and hence this is, should it tie up? Yes, it should tally 70,000. बराबर. And we'll go to the last question. Question number 8. Question number 8. From the following summary cash account of XYZ Limited, prepare the cash flow statement for the year ended 31st March 2011 with Ind As 7 using direct method. You have been told direct method, but the best part is what you have been given is not the income statement. You have been given the cash bank account. So if you have been given the cash or bank account, then it is nothing but the cash flow statement prepared in ledger format. आपको डायरेक्टली यही नंबर देना, यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करना ही नहीं है, बस ये एक्चुअली कैश बैलेंसेस है. यस, अपन हर एक चीज आइडेंटिफाई करते हैं. बैलेंस ऑन 1 April 10 किधर जाएगा? ये ओपनिंग, बाजू में ओपनिंग लिख के रख सकते हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स किधर जाएगा? फाइनेंसिंग, रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ऑपरेटिंग, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग. अच्छा, ये सब रिसीट्स है, राइट? पॉजिटिव दिखेगा, समझेगा कैसे रिसीट है? वेल, बैंक के डेबिट में दिख रहा है. ऑन द क्रेडिट साइड पेमेंट टू क्रेडिटर्स. अच्छा, यहाँ पे भी अपने को सेम ऐसा प्लस माइनस का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? नहीं, परचेज सीओजीएस नहीं है, तो पेमेंट ही है डायरेक्टली. ऑपरेटिंग, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टिंग, ओवरहेड एक्सपेंडिचर,
ऑपरेटिंग, पेरोल, टैक्स पेमेंट, डिविडेंड. अच्छा, फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग है? बिकॉज पेमेंट साइड पे है तो डिविडेंड पेड हैज टू बी एन एक्सपेंस एंड हेंस इट इज ऑन आवर शेयर्स. फाइनेंसिंग, रीपेमेंट ऑफ लोन, फाइनेंसिंग. बैलेंस एज ऑन 31 March 11 क्लोजिंग. यस, फटाफट एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बना लेते हैं. वी हैव XYZ लिमिटेड. आपको क्या करना है, पेज को 1/3 1/3 1/3 डिवाइड करना है. लास्ट में 3 लाइंस ओपनिंग, नेट चेंज प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर देना. सो XYZ you will have cash flow statement. For year ended 31st March 11, ₹1,000. Cash flow from operating activities, 1/3 of a side. Then cash flow from investing activities, 1/3 of a side. Cash flow from financing. एंड लास्ट के 3 लाइंस पे अपन लिखेंगे नेट चेंजेस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट gives you closing cash and cash equivalent. अच्छा, एक बार अगर ये हो जाता है तो अपने को जो अपन ने मार्क किया वो नंबर से सिर्फ पोस्टिंग डालना है. सबसे पहले अपने को क्या दिख रहा है, ओपनिंग, लास्ट में अपन 50 रुपीज लिखेगा. देन इश्यू ऑफ शेयर्स, दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, इश्यू ऑफ शेयर्स. अच्छा, ये कैश फ्लो पॉजिटिव इनफ्लो होता है तो पॉजिटिव दिखाएगा, आउटफ्लो आएगा तो नेगेटिव दिखाएगा. इश्यू ऑफ शेयर्स, दिस इज 300. रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स ऑपरेटिंग में जाएगा, रिसीप्ट फ्रॉम कस्टमर्स 2800. सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स 100. लेस आएगा पेमेंट टू क्रेडिटर्स 2000. परचेज ऑफ FA कितना है, परचेज प्राइस 200. ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना है, लेस 100. पेरोल टैक्स पेमेंट 250. डिविडेंड 50. रीपेमेंट बैंक लोन 300. एंड यू हैव क्लोजिंग बैलेंस, इट इज 150. सो अपन क्या करते, अपने हर एक का पोस्टिंग दे दिया. सो टोटल each of the items, this will be CFF. CFF आपको आता है -50, we can call this as point C. CFI we can call this as point B, ये अपने को आता है -100. and CFO
पॉजिटिव 250। तो अगर अपन नेट चेंज निकालने को ट्राई करते हैं, दैट शुड बी द टोटल ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, दैट इज 250 माइनस 100 एंड माइनस 50। तो कितना आ रहा है नेट चेंज? 100। एंड इज इट टैलिंग? यस, दिस इज 100 plus 50 and that comes to 150. Straightforward? Yes? Fair. We'll stop for a break and then continue 115. हाँ? क्या? हाँ तो अभी आपको चाहिए तो आप अभी कॉपी कर लो, करो ना कॉपी, आपके पास तो टाइम ही टाइम है अभी।